Hello, I am Dr. PPP. I am the Celebrity Guru, award winning author of the book You Are the Celebrity. I am the marathon man who ran not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven, not eight, not nine, not 10, not 11, but 12 marathons in my lifetime by God's grace and your blessings. And the Himalayas Guru is climbing the Everest, the Himalayas by God's grace and your blessings. If the celebrity guru can write, so can you. If the marathon man can run, so can you. If the Himalayas guru can climb, so can you. Life is the movie, you are the celebrity. Life is the celebration, you are the celebrity. Life is the marathon, you are the marathoner. Life is the book, you are the author. Life is the mountain, you are the mountaineer. I am honored, humble, privileged, blessed, and super excited to introduce you Torch Environment Hello. host, none other than Fatima Aziz. Assalamu alaikum, Fatima Aziz. How are you? Assalamu alaikum, Fatima Walaikum Aziz. assalam. How are you? I'm the heaven. I'm the heaven. Yes, yes, yes. Okay, and also let me bring none other than Abbas Kamar. Okay, Abbas Kamar is also the amazing gentleman from Pakistan. Fatima is also from Pakistan, and Abbas is waves of kindness, inspiration, waves of kindness, amazing host, and wow, wow, wow. Also, Abbas Kamar is the World Spiritual Celebration speaker on May the 8th. Yes. Also, Fatima Aziz is also the host of World Spiritual Celebration. Okay, so welcome, 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 Abbas. Thank you so very much. First of all, Guruji, Dr. Praveen Patel, magnetic entrepreneur, the celebrity guru. And I'm really honored and privileged to be on this platform of Torch under the supervision of my guru, my Ustad, Dr. Praveen Patel Sahab. And we are really honored to have Madam Fatima Aziz uh, or to be with us here. So please, let's begin the show. Thank you so very much, sir. Thank you, ma'am. Yes, Fatima ji, are you there, Fatima? Okay, first of all, Abbas, I would love to thank you from bottom of my heart for accepting the challenge within couple of minutes. I just sent the link like less than 5 minutes ago, and you just showed up. And this is the real sign of successful people. Successful people choose yes or no so quickly and figure it out why later on or how later on rather than why figure out how later on. And you just did it, you just showed up and that's it, boom. And Fatima Aziz, welcome, 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 welcome. Yes, Fatima Aziz is the again, let me introduce, man. I'm humbled, honored, privileged, blessed, and super excited to introduce you, my soul sister, all the way from Gilgit, Pakistan, and the host of Torch Environment. Last year also, Fatima was the Torch Environment host, and consecutively second time Torch Environment host. Wow, Fatima, congratulations! Thank you so much. Can you hear me? Loud and clear. Okay. Thank you so much, the guru of celebrity. You have this wonderful art to find out the celebrity and every personality. So thank you so much for using such a wonderful and amazing word to introducing me.
And I am also saying welcome to Kamar Abbas. Okay, he is here to join us today. To share their knowledge, experience, and vision of the thoughts. So thank you so much. I am very grateful to part of this live broadcast. Oh, you're welcome. You're welcome. What is a torch to you, Fatima? How I found Tarch. What is the Tarch? In my eye, the Tarch is an amazing platform who is working to make the better place for this better place for everyone. It is working on the working for the health, environment, tech, and four pillar is I forgot the four pillar. Okay, there are four pillars. Okay. Yes. May I introduce four pillars of torch, if you don't mind, Fatima? Okay, very first the digital senator is here, so I would love to say welcome, sir. Oh, awesome. Oh my gosh. Digital senator is in the house. Awesome. Uh, Awesome. Awesome. Okay. Introduce digital senator and then I will introduce digital senator and we'll go from there. so I introduce, yes, that's welcome digital senator. As you know, he is the first digital senator of the world, and I'm very honored that he is joining us now. And he also did a very great job to create the real the soft image of Pakistan in front of the world. So welcome, sir. I think he is. Are you there? Mian Atif Saab is the digital senator. I don't see in the back office Mian. Okay. Uh, एक minute, let me check. Maybe he will join after the few. He is back. Oh, really? I don't think so. Saif, are you So, there? you okay? I will continue. I am continue. You asked me about the torch. So the torch is doing very great job, and I'm very. The Mama Lin is leading the torch. So she is a wonderful lady, and she did the very great effort uh, to lift up everyone and provide this amazing platform. And I meet her before 1 year in Karachi when she visited to the Pakistan, and it was amazing. And she gave the presentation about the starch and his vision and how did the torch working in Pakistan. So it was awesome and amazing. Through this, through Miss Mama Lin, I meet the wonderful, amazing person who is doing uh, work on the same object to make this planet beautiful place for everyone, to promote the positivity, awareness about the health, and so many things. Wow, wow, that's amazing. And that's how your journey started with Torch and with Mama Lynn. Cool. How about you, Abbas? What is Torch to you and how your journey started with Mama Lynn and Torch? Yeah, it was a wonderful experience. I still remember that for the first time when I went on Mama Lynn's platform. Actually, I was following Sir Rehan Allawala Sahab, Sir Rehan Allawala Sahab, and when I was following him, so I used to go wherever he goes on internet, and once he went with Mama Lin, he was talking to Mama Lin, so I jumped in. I clicked the StreamYard. That was the first time uh, when I talked to Mama Lin, and I was so surprised that she's such a humble lady and she's doing so much for around the world. But especially, I was so happy
that she is doing so much for Pakistan. And I met Madam Fatima Aziz on her platform, on Mama Lynch's platform. And I was also very happy that Madam Fatima Aziz is from Pakistan. For the first time, I heard her, I saw her on screen, and Mama Lynchitek introduced her to me and introduced many other people to me, and it was really amazing. And I'm so proud to know at that time that Madam Fatma Aziz is doing such great work for the community. Yes, so this is my take on this. And thank Beautiful. you, yeah, thank you so very much, Mama Lynchitek. Thank you so very much, Madam Fatima Aziz, for your great efforts, and thank you so very much, Guruji, Dr. Praveen Patel, magnetic entrepreneur. Thank you so very much. Dhanyawad, Ah, Jazakallah. Jazakallah. I love it. जब आप Jazakallah बोलते हैं, when you say Jazakallah, I love it. I love it. I love it, brother. And I love you're taking so many notes, and I've seen your growth. I witnessed your growth, like, yes. So really appreciate that. Now, the torch stands for the Organization for Realizing Change in Humanity. TORCH. Torch has, yes, absolutely, yes, Torch deserves a round of applause for sure, big time. Yes, Torch has four pillars. What would you love the most? Peace, health, environment, or technology? What would you love the most? Actually, sir, all four of them are very, very, very important, and all are very powerful and required, necessary for humanity. But I would go for peace if I want to select one out of four, because if we have peace, everything else will come automatically, will follow automatically according to my understandings. If we have peace between each other, between the different communities, different cultural people, different religious people, and different people from the different countries and cities, if we have peace between us, technology and health and all, everything will follow. Beautiful, beautiful, beautiful. Close your eyes, Abbas. Take a deep breathe within, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Abbas, you are the Torch Peace Ambassador. Yes, you are the Torch Peace Ambassador. And the Torch would love to have you as the Torch Peace Ambassador. And definitely, I totally agree with you. Peace is very, very, very important. And you chose peace. I appreciate that. Now, what you are going to do is you're going to find out another three people around your local area who love the who love health, who love environment. Somebody loves technology, and form a team of four pillars of the torch, and do some small little actions towards the change. You have you get bitten by the elephant, Abbas? Not yet, but Okay, thank God. Thank God. How about the mosquito? How about the mosquito? oh yeah, so many Good. times, so many times. Small These days things, it's good. small things, make the big difference, right? So yes, absolutely. So small changes, like the mosquito bite, and boom, man, right? So yes, this is it. Yes, and Abbas, uh, we are having the annual events of all these four pillars in a year. So this year we are having our Torch Environment mm, annual summit, right? We just finished around month of February Torch Tech, right? We are going to have Torch Peace in around July. We are going to celebrate our fourth happy birthday of Torch.
around my birthday, Mama Lynn's birthday, Rabia Rabel's birthday, our Princess of Peace from Pakistan, Taqwa Ahmad's birthday. So around that time, mid July, we are going to have torch piece. Then towards around October, November, we are going to have Torch Health annual event. Yes. So what is Torch environment to you? Hey Priscilla, thanks for joining. Feel free to join. Feel free to join. And same question. Yes, I'm going to ask Fatima too. Fatima, what is a Torch environment to you? What is Mother Earth to you, Fatima? Torch. Actually, the selfie is on the back of the camera. I am trying to in. Can you check? Sure. Okay, who's in? Okay. I did. I did my best to bring Saif, but this time I don't see him. I don't see him in back office. Saif, uh, join again, and I'm going to bring you, sir. Okay. So you are asking about me. Okay, what is the environment? Torch environment to you, yes, or Mother Earth to you. Um, environment which is surrounding us. It is a very important for everyone. But unfortunately, as human, we are destroying the nature, the environment. So that's why the current we can suffering a lot, and because of the global change and the crisis. So I observe and I feel that we need to be aware the people about the importance to take care the nature, because and it is a very important if we want to be uh, live happily, and uh, so we need to be take care of our environment. So I am taking action as individual in my community. I am taking the awareness session for my student, for the community women, uh, to aware the importance of the environments and how we can as individual can act and can role play and take the responsibility to make the better environment. So I am creating the awareness very first, and I am doing the one project on the kitchen gardening. The second step, second project is my to sorting the garbage, and the third project is, if these all are the physical project which I am doing in my community to save the rainwater. Very first, when I'm focusing on the awareness, so then I decide, okay, now the people is understanding my point of view and my object, so they are ready. So I am starting the plantation in my area with the help of my student and help of the community people. And since 3 years I am working on it. Very first, when I have this idea, because as you know, I'm the working in the school. So I my one friend is give me the post, okay, about the global alarming, and okay, Pakistan is in crisis because of the environmental changes. So we everybody need to plant their environment, their plant. So in this post the mention, okay, if every person planted the hundred plants, so then we can uh, on that stage that okay, we are now the Karachi, my city, the Karachi is have the good environment about the clean environment, clean airs, the eco environment, to develop the ecosystem. So the bird can we can the sound of the bird, you also can hear from my environment the sound of the birds, because I have the park in front of my house. So it's daily a very lovely moment when I wake up early in the morning, and very first I spend the some moment to hear this lovely sound. So I started before 2 years to collect, to read this post, and to starting. Uh,
create the awareness about among my students. And firstly, what we in my area there are so many the neem trees. So with the help of my student, I am collecting the neem seeds and planted with the help of my student. So it was successful experience. We did the so many neem trees, and in my area. Sorry, you can also the sound of the dog. That's beautiful. That's beautiful. We are talking about environment, and you are like live example, not only speaking, but like, yeah, practically living it. Beautiful. I think that's not a big deal. Okay. Okay, so for very first, I want to say welcome. The Safi is joining us right now. So please, Mr. Guru of Gavadar, to welcome him. Then I will continue. Sure. Saf, welcome to the family. I watched today actually, Saf, at this platform, Torch Environment platform, and amazing. Torch Saf is wearing Torch shirt, like, yeah, and Mama Lin gave him 100% right to sell Torch shirt, and get the 100% income for himself, Yeah, so Saf, welcome, sir. Yeah, I understand. Thank you very much, sir. Thank you very much. Saf, can you come on camera? Yeah, why not? Ah, there you go. Yes. Wow. I I heard love about alerts about Saif, and I am very nice to meet him. And he also belongs to the Karachi. So welcome, Saif, and please kindly introduce yourself and tell us about Taj. What do you know about the Taj and his object and his vision, and how are you become the part of this amazing family? So please share your experience. My experience was really good, and I joined it, I think, since 2017 or 18. And in the beginning time, I served my 3 years in Torch. Torch is really good platform. Uh, After all, I just want to tell that this is very best platform to introduce yourself. And also, I'm little bit confused because of my network connection. Hope you guys are listening me. Yeah, Yeah, yeah. listening me? Don't worry. We are listening. Your voice is very clear and your video is also very well. Okay, So please that's good. continue. It's okay, sir. If you feeling trouble coming on camera, you can say it without camera, but keep your mic close to your mouth so we can hear you clearly because your sound is a little bit slow for me, Mr. Seth. It's really an honor to have you on the platform. Please go ahead, sir. I think Mr. Seth could not hear us, so Guruji, sir, Dr. Praveen Patel, please carry on with the show and Yes, let's see when he comes back. Let's continue. yes, the Continue. same My question network to was. you too, Abbas. Oh, yeah, go ahead, Saif. Go ahead, Saif. You're Yes, sir. listening me? Yes, sir. Your sound is very slow, Mr. Seth. Can you keep your mic to more to your mouth? Okay. I think there is some glitch, Yes, go ahead, Abbas. Guruji. Bye. What is, Yes, sir. what is the environment, torch environment to you? What is Mother Earth to you? Take it away, sir. Yes, sir. Torch environment is amazing environment, as Mr. Seth said, and I didn't know. I've never met Mr. Seth before, but I'm really happy to know that since 3 years he has joined Torch community, and it's an honor for me to meet him today. And as Madam Fatma Aziz also said that Mr. Seth has done a lot of work, and Torch environment for me is that it brings all of us together. Like Madam Fatima Aziz, I didn't know Madam Fatima Aziz earlier before I met Mama Linchitik on the Earth Day on Torch platform. So this is because of this platform that I came to know about Madam Fatima Aziz. Although we live in the same country,
but we didn't know each other. Same like that, I didn't know Mr. Saif before today, but because of Torch platform, because of the environment of the Torch platform, I met them. Now this is the virtual environment. Now let me come to the physical environment. What Madam Fatma Aziz is doing, and what Mr. Saif is doing physically, it's really phenomena, and it is need of the hour. Because as Madam Fatima Aziz said, that if we will plant more trees as she's doing, like you said, Sir Guruji, that we can hear the dog as well, we can hear the birds as well. So this is not normal actually. In the days of Corona, even before Corona, people like me, we were living like robots. We stay away from the dogs, and we stay away from the birds, we stay away from the sea. I'm not saying that everybody is like that, but majority, people in masses, they were living the plastic life. And after Corona, I'm so surprised that in the days of Corona, I can hear the voice of a dog near Madam Fatima Aziz. I can hear the voice of birds near Fatima Aziz. Even I'm getting a little bit jealous of her, because in these days also she's living so naturally. It is really not normal. It is unique in these days. I wish that I could live like those white people or black people in the Western world. They live naturally. They live natural lives in the near the forests. They take care of the trees and plants and flowers. And being Muslims, being from Pakistan, we should take care more of these things, because our last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajum, somebody asked him that if you know that tomorrow is the last day of this Mother Earth. I'm trying to translate into English because I read it in Urdu, and my father, Ghulam Abbas Barkat Ali Haryani Sahab, he showed me the book. I still have that book. So for the first time, he made me read it by myself. So it was written in Urdu, and I will try to translate it in English. That somebody asked our last prophet that if you know that tomorrow is the last day of Mother Earth, what will you do? One Sahabi asked. So our last prophet replied to him that even if I know that tomorrow is the last day of this earth, I will plant a tree, or I will plant a plant, poda, ya darakht. There are two riwayats, there are two types of stories, real life stories regarding this uh, 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 incidents which happened between our last prophet and his student or Sahabi. So if our last prophet said that if earth is going to be destroyed tomorrow, even then I will plant a small tree or a plant. So what does that mean? We should follow more as compared to the Western world, but I respect at the same time to the white and black people of America, Canada, England, Germany, Russia, and Venezuela, whatever, because they're not Muslims in majority, but they follow Islam. So that's my take on that, and I'm really happy to hear the noise of the birds and dogs. And thank you, Mr. Safe, for being here for us. Thank you, sir. Welcome, welcome. Fatima ji, this is for your beautiful eyes. इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से ये किसने उतारी आंखें. हाँ जी. Yeah, baat hai, sir. You are so pure soul, and in the beginning, as you said, that Madam Fatma Aziz is your soul sister, and you sing this song for her. It's so amazing. I mean, you're such a pure spirit, Guruji. Dhanyavad, Jazakallah. Jazakallah. Love you, sir. Love you, sir. I love it. Any questions, Fatima ji? I know Fatima love to ask questions. Fatima love to host. Of course, same thing with Abbas too and me too. So there are three hosts, so now this is amazing. This is amazing, And Said that the Qamar is now seem to be the professional broadcaster.
Thank you, ma'am. Yes. Thank you. It's an honor. It's an honor for me. Thank you. It's totally now. This is also the you can say this is the environment and this is the technology which also the TARS is doing work. Okay. The technology gives the opportunity to everyone what is their real talent so they can found easily to using the technology. So this is also the need of now nowadays every person should be able to use smartly the technology to connect. If we say that the world is become the global village, so it is global village. Now we are belong to the all different region, all different countries, and we are very far away, but we are on the same platform and we are discussing and we are sharing and we are talking, we are appreciating like a family, like we are in the same room. You can say it seems to be that we are in the same room. Absolutely. Yeah. Yes. Yes, Dr. Saab, and I really agree with Madam Fatma Aziz. Plus, I want to say that she's so simple because now it's a long time. We have never met physically. I only met her on Madam Lynn Chitik's platform for the first time, and I'm thankful and grateful to Madam Mama Lynn Chitik to let me meet Madam Fatma Aziz. What I want to say that she's so simple. Madam Fatma Aziz is so humble and simple, Dr. Saab and Mr. Saif, that she's doing such hard work for the agriculture and plantation and for the city, especially Karachi, and still she's not proud, and she's so confident. And I remember when I used to watch her programs when she was taking more interviews. So it was all about agriculture, plantation, and the betterment of the city Karachi. So I really feel proud to be a part of this family, and really honored to have Madam Fatma Aziz especially. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Let's say very first all credit goes to Rehan Allahwala because he is the starting. He is creating such a such a great and a huge connection. So he, especially I want to say that he is connecting the Pakistani people with the people of the global. So before his what's the vision of Rehan Wala or what so many people don't know about, but he just know his name. But I really want to appreciate that the the unique idea. Okay, if we are connecting the people, so we can learn easily so many things that we can get the benefit to each other, we can uplift to each other, and we can to become we can remove the reflect, and usually it's happened, so we can create such a beautiful positive environment. We can promote the humanity, the peace, when we are saying that we are uplift to each other, it means that no one be left behind. We are equal. Allah subhanahu wa ta'ala created us as humans, so we all are equal. Either what where we are living and what is our culture and what is our profession. So, and the if we are talking, so we are same, but unfortunately, what is observed in our society, and you guys also agree with me that we are divided in the different उसको क्या कहते हैं तबकों में हम बटे हुए हैं ना. So we are creating that the richest people, the poor people, the third world country, the developing country, and we are treated to each other um, to according to their status, so social status, financial status. So this is a these things make divided the people. So we need to, okay, because of Rehan Allah Wala connections, we are have the chance to connect in the wonderful and amazing people. I also connect with Rehan Allah Wala connection to Len Chitik. So I'm very thankful to him.
Either I am not totally agree with him, but it is my right. But I really appreciate him. So his services, his positivity, which he is creating, and he played a very great role. And we can say, कि as Pakistani, we are feel proud to him. Okay, he is doing this. And I am asking celebrated group that give me the chance to ask the question. So I'm asking you both people to tell us any problem, but any problem which you are observing in your area, any problem regarding to the environment. So one by one, yeah, Great question, Fatima. And I really totally appreciate the love you have for Rehan Bhaijan. That's amazing. Out of this world, beautiful. And definitely any person you can meet, always, 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 say like great, great, great love and great words for Rihanna Lawala. Very well deserved for sure. Absolutely. And yes, मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि यार रेहान भाई के लिए पाकिस्तान के लिए मैं मेरी चमड़ी उधेड़ दूं ना फिर भी मैं आई कैन नॉट पे बैक टू पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान से कनेक्ट करने वाले जरिए वो अल्लाह ताला ने मेरे को रेहान अल्लाह वाला भेजा. सर आपका बड़कपन है और दूसरा ये कि हम लोग वी आर रियली थैंकफुल टू सर रेहान अल्लाहवाला साहब because of whom we have been connected to the magnetic entrepreneur, the celebrity guru, and we are so thankful and grateful to Sir Rehan Allahwala Sahab that he introduced us to such a beautiful, pure soul that is Dr. Praveen Patel Guruji. And really, really, wow, it's amazing. You are a gift for us, Sir Guruji. Really, the way you speak, the way you empower. Since first day I met you virtually, I have never met you as well. Uh, and the thing is, you are same. You have never changed. You are so humble since first day. The way you speak with love and care, it's never changed inside you. And you are same since the first day till now. Your love and caring nature is same like that, Guruji. So it's really an honor for us, especially me. I would say that I'm here with you, Guruji. So yeah, it's again it's a blessing. It's a blessing to have you. So the question was by Madam Fatma Aziz that what problem do we face near our area or in our area? yeah, Luckily, in my area, things have been sorted out so much nice that cleanliness is getting improved. And I was I had a fight with some people because, and the fight was not for me. Uh, Before I used to get very emotional. Uh, it's like when we get out from the building, it's a residential area, schools are there on the other side, so the scooters and the cars used to come very fast. So I requested and I talked. First I requested, then I tried to convince, then nobody listened, then I eventually I had a small fight because everybody said doesn't matter. What I meant that I wanted speed breakers on the road so that small child or ladies or old people don't get hurt by the scooters, because so many times so many people got hurt, then so many times so many people were saved by the bell. Then luckily I was saying it, I followed the strategy of Sir Rehan Wala Saab. Well, Sir Rehan Wala Saab is saying it since 30 years, but I started saying it just a little time back. So it creates an impact really when you keep saying it, when you keep knocking on the door. कतरा कतरा समंदर बनता है, तब जरा जरा पानी भी टपकता है तो बड़े से बड़ा पहाड़ में भी होल हो जाता है, सुराख हो जाता है. I really stand by this statement 110%. बोलते बोलते I kept saying it. Now there are three speed breakers on the same road because I personally, there one family lives on the upper floor, and her small child was crossing the road for some ice cream,
आइसक्रीम वाला आता है साइकिल पे, वॉज आइसक्रीम। तो जैसे ही उसने क्रॉस किया, वो व्हेन ही वांटेड टू कम बैक, ए फास्ट motorcycle came and he was about to get an accident, hit the motorcycle. But I just grabbed him. It's little time back, and I shouted on the motorcyclist that please, I said it in Urdu, that please drive slow. This is not the highway or the main road. This is residential area. He replied to me back, "Tere baap ka road hai kya?" He replied to me in English. It would be, "Is it your father's road?" So the thing is, if speed breakers were there earlier, he wouldn't drive fast. Anyways, so it's vice versa. Now speed breakers are there. Eventually, and I'm not saying it's only in my country. I've been to UK, in England also people are like that, not only in Pakistan. I've been to UAE, in UAE also, wherever there is a malfunction, people act accordingly, even in Qatar, even in Iran, even in Saudi, because I've lived in these places as well, along with the other parts. So everywhere where there is a malfunction in that area, these things happen. People go accordingly. Their mindset becomes like that. So it's not only in my country, but I'm more concerned about my country because it is my country. So that's my take. And but still, so many. There is a potential, and my area is better, but other areas like Thar Thar desert is there, and other so many places are there which needs more improvement. Because in my area, the people take care. Mostly the big things happen. The business communities, the charitable communities, the NGOs, they take care of the area, and we also volunteer sometimes. So it happens. Everything is going good. Nothing, it's not a problem that much, but small things are there, which is very difficult, like violation is there. It should not be discussed because these are small issues. Like in the building, the flats have same windows, you know, amne samne. Exactly. Yeah, so doors are like that. It should not be like that, because it's so privacy gets disturbed. And I mean, I don't have the habit because I was not born here, and I also lived with so many Pakistani people outside. They are different there, but the thing is, again, in India also it's going to be same, in UK, United Kingdom, all in the smaller areas these things happen. So I don't want to discuss those issues, but still, if the bigger issues are solved, then we should come to the smaller issues as well. And I'm really thankful to this platform that it works for humanity. The Torch platform, they give the charity also to Pakistan and other parts of the world, and they gather the team like Madam Fatma Aziz, Sir Mr. Saif, Sir Dr. Praveen Patel Sahab, and it's a big team. And slowly, gradually, we will get to know more people on this platform. Yeah. So amazing, Abbas. You are saying, you are sharing your experience. It's not the small action. You know what I learned about your conversation? We all as human, we all as citizen of what is where we live, it doesn't matter. But if we are observing the wrong thing, so we should raise our voice, and we should take our take the action. So small action together become the big action. So it's that case, you have the civic sense. I call that this is the civic sense. As a citizen of any city, we need to observe these small things, and we point it out, and we try to solve a small problem, so it will not become the big problem. Even if you are talking about the flights, flats are very near, this is not the very a small problem, and you say, "Okay, I don't want to," but it create the big to destroy the privacy of the people, is create the anxiety of the people.
so it create the bad relation to the human. So it's not we need to be the people should have aware about okay, how to be build the buildings and how to be when they are the builders are starting the project, so they should focus on these concerns. If the house or the flats or the bungalow and whatever the any apartment office fulfill all these aspects. So Yes, I totally. Oh, sorry. I that's thought. why I'm this question. Okay, which type of challenges as you are, because we are belong to the different areas, na? So which type of the challenges you are facing? So that's why I'm Yeah, asking this. yeah, it's a beautiful question from your side, madam. And yeah, I agree with you. Like you said, when they build the building, it's not very difficult. Like if one window is there, they should put for the other flat, they should put the window a little bit here so they can't see each other, you know. Like But they're yeah, but they don't want to do the hard work. They will put everything in one, line. And doors are also like that. Lift is opening, and if your flat is in the middle, the person who's coming out of the lift will see your door, and it's not good if the door is open, because we keep the door open in Karachi because it's so much. It's not like Islamabad or Lahore. The oxygen is very less. Buildings are there, face to face. Air is not coming, and yeah, these are not small things. What a beautiful thing you said that there, Madam Fatma Aziz, and I would like to rephrase it and highlight it in front of Dr. Praveen Patel Saab Guruji and Sir Saif, that this creates anxiety. Especially, I'm the living example, as I was not born here. So when I see I cannot drive here, although I'm adult enough. I used to drive. Driven in UK, I've driven in UAE, I've driven in Saudi, I've driven in Iran, I've driven in Qatar. But if I drive here in Pakistan, I get angry, when I come back home or even on the road, because it's not easy to change a person who is 40 years old. You can change a person or a child when he or she is 4 years old. You can brainwash or make them unlearn something very easily. But if a guy is 40 years old or a girl is 40 years old, you cannot brainwash that person. I mean, I cannot tolerate the overtaking and without going wrong. I mean, if you see here, person will fast speed, they will come from the other side. And one of my friends who was panwala, maybe it's funny for you that my friend was panwala because I was not born here, so I don't uh, put the barriers like you said in earlier, that we all are equal according to Islam. And our last prophets sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, his saying is that, his hadith is that, कोई अरबी अजमी से बेहतर नहीं है, कोई अजमी अरबी से कमतर नहीं है. So it means that, and Guruji also knows about this saying, and I'm sure Sir Saif also knows about it, that everybody is equal. So I make friends everywhere. So the panwala was my friend. I used to take pan before my mom used to eat pan. So I used to take pan from him. And suddenly I was in Glass Tower. At that time, my office was there. When I came back home, my friend told me that the panwala is dead, Rahim Bhai. I said, how come? Just yesterday I took the pan from him. It's 5 or 6 months ago. This story is 5 or 6 months old. So I said, just yesterday I took the pan from him. He said that he just it was the time for salat namaz, the prayer time. He just went off the road. He finished his prayer in the mosque was also very near to his shop, and he was also near to our house. So his shop was near to our house. So when he was coming here, he was watching on the correct side, that if some scooter or car will come. Some scooter came from the wrong side. Now it's a two-way road, and they just ran. They hit him and ran. They hit him by mistake and ran.
but it's not a mistake. Why they are driving so fast in the commercial area, you know? And he broke his leg, and they took him to hospital. I was not there. I didn't even know that at that time. I was in the glass tower in the office, and he died. He died. Just yesterday, I took Pan from him. He was like a brother to me. He was very elder than me, like 6, 7 years or 8 years elder. Now he's no more. This is only 5 or 6 months back, old story. So what I'm saying, this is not done. I mean, the life is wasted, you know. So Yeah. the thing is, yeah, I think personally, and there is one where my favorite celebrity, Sir Faisal Qureshi Sahab, and he used to come on air. Right now he's working on Bold TV. When I used to watch his program, his morning shows on the repeat telecast on the YouTube, he told us the story that 40 years back, Canada's traffic system was a corrupt system. Everybody was doing accidents. Everybody was doing overtaking. So many people were getting disabled because of the accidents. So they used to put them in jail in Canada just 40 or 45 years back. So when the people came out of the jail, they did the same thing. So the government put the fines on them. First they will put him in jail, then they will fine them. Again, the people, when they went into the jail, they came out, they gave the fine, and again they are doing the accidents because the system was corrupt. The people were taking the traffic system for granted. Now the government understood of Canada that we cannot change them, so we have to work on the next generation. Now in the schools, from the nursery or KG, they put in the colorful pictures in the books that the traffic signals, cars, and told and gave notices to the parents, to the teachers, that if you don't teach them anything, but please teach them that traffic signals are obeyable and you should obey the traffic signals so that you cannot harm other people's lives. And now you see Canada is one of the top 5 countries where the traffic system is number one. So this we have to work on the next generation. If nobody will drive fast, the scooter or the, because how, you know how these speed breakers are made? When I was shouting, first I tried to request them, then I tried to convince them, then I shouted, I had a small fight. They didn't listen to me. The people who made the speed breakers are from my buildings, because their children got hurt. I'm not happy for that, because somebody else's children was about to get hurt, they didn't listen. Now their own children got hurt, because they have the influence, they And have the feel. power. Yeah. So this is the thing. The thing is, we all have the power, we all have we can, but I personally don't like to bring the power in a negative way. Why not? People should listen to each other in a normal way. When that If you are saying something right, if Dr. Saab is saying something right, if Mr. Saif is saying something right, if Madam Fatma ji is saying something right, why don't we listen then? Why do we ignore each other? Why, when something happens to your own child or to my own child, then I make the speed breakers? So the thing is, this is hypocrisy, pure hypocrisy. uh, Again, we have to work on the generations. What you are doing, Madam Fatmaji, is what you are doing, Guruji, Dr. Praveen Patel Saab, and Mr. Saif. We have to do it, and until our next generation grabs it, grasps it, and they bring it into their lifestyle, you have to keep doing it. We have to keep doing it. Yeah. Yes. Yes, sir, you're right. I'm totally agree with you. Again, if I conclude your point, so it means that we need to be educate the people. We need to be work on the small kids, the new generations. So that will after the 25 or 15 years or 20 years, then we will able to produce a good human for the society. And We madam, my request is that you can uh, educate your child, I can educate my child, but it will not happen then. We have to educate them in masses, like the Canadian government. They put it in the curriculum, in the syllabus of the
kids of nursery class, KG, Yeah. kindergarten class. But how can we do that? We have to figure out a system that how can we impact the masses, the children in the masses, because their parents are, either we can train the parents first or we can train the children, but we have to do it, either thing we have to do it in masses. If we want to train the parents, we have to do it in masses. If we want to train the children, we have to do it in masses, otherwise it will not work. It will go like this again and again, the next generation also. Teaching my child only, teaching my parent only, or I'm talking about myself, teaching myself only as a parent, it will not work. We have to teach in masses. If we want to teach the parents, we have to teach in masses, or if we want to teach the next generation, the children, we have to teach in masses. Just teaching our child today, it will not work. Only one person cannot really make that, it will not create a abundant society, Hmm. Yes, absolutely right. Wow. I hope you guys are listening me. I want to tell you something. Yeah, please. Yes, sir. I'm telling that ke now I'm in Quetta, Balochistan. So I want to work for peace on 9th May. Hope you guys will watch and support me, and those the viewers will support me. And Okay. I only believe in humanity. First priority is humanity. Yes. Absolutely. I totally agree with you, Wow. sir. Yes, and wish you all the best for May 9th. Your work for peace in Balochistan and Thank you in very the much. part of Pakistan. Yes, absolutely, brother. Absolutely. You are the perfect role model for Torch Peace. And then you also share your experience to meet Haji Frosh Khan, please. Yes, great question. Great question. Haji Khan Farosh is really a great man. He is really hardworking for peace. And you guys are listening me? Yes, Yes, please. yes, please continue. Yes, sir. Yeah, all right. I'm telling that the man was really great man. He's working for humanity, peace, education, and also his nature is good. I think I met him only one time in Mazar-e Qaid when he arrived from I think Quetta. So really, my experience was that he is a really great man, and he is the oldest person from Torch organization, the organization for realizing change in humanity. Also, the platform annual Torch environment. This is really good because those people they don't have any confidence to talk on the camera or anything else. So to improve yourself, this is really good. And so that's it. Anyone can start. What Beautiful, they sir. think about that. Beautiful, sir. Sir. And I wish you all the best. Keep doing what you're doing, and definitely Torch is with you. And you are the torch. You are the torch, and I'm Definitely, we all are support you. here. All right. Thank you. Thank you. Yes. So my question to you is, Abbas, Fatima, as well as Saif, what one thing, what one thing you're going to do for environment? So who Actually, will talk first? You're talking to me. Sure, Yes, you sir. go ahead. Sure. I'm having a bad experience because my data was really slow, and also So when that's I why try to we open are my giving the camera. chance to first. I'm just back to after 5 minutes. Please continue. Excuse me. You're listening. Yes, sir. yes, sir. Yes. Now I can start. Yes, please, Really sir. sorry for my bad experience on that. के मेरा network बहुत slow है यार. No I'm really problem, no sad. problem.
No problem. So You Please showed up. go ahead. That's what important, right? the You showed up. environment, Maholiyat, I think we change the humanity. There are those guys, they don't have humanity. They don't have the way to talk, how to talk with a person. The politely जैसे बात करना is the best way. And also the कलम जो है ना बेहतरीन हथियार होता है. So I only believe in humanity. Also, as I'm a member of Education, Peace, Health, I spread positivity. And also, I want to tell those people, okay, why we not care poor children. Sometimes ago, I posted on my Facebook's timeline, okay, we should care poor children. If somebody can, यानी if अगर वो कर सकते हैं इतना, एक अगर स्टूडेंट को वो एजुकेट कर सकते हैं ना, तो अब अगर कोरोना भी है तो मिलियंस ऑफ पीपल्स और चिल्ड्रन वो स्कूल नहीं जा पा रहे. तो मुझे दिल में ये दुख होता है यार कि मतलब एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको. तो दैट्स व्हाई मैं पोस्ट करता हूँ कि यार व्हाई वी शुड नॉट केयर पुअर चिल्ड्रंस. सो दैट्स इट, एनीवन कैन स्टार्ट. Beautiful, beautiful. So Yes, why sir. don't you start, sir? You have such a nice. I'm so happy that your English is so good, and your style is so polite, and uh, you are so polite. Why don't you start? You want to do it, you should do it. Because Why you want other people to do it? What if I don't want to do it? Guruji don't want to do it, or madam, you, you want to do it, so you will do it, na? We will do it what sir, we want to do. Guruji is my So best why teacher don't you ever. start it? My teacher. He's my teacher. I will fight with you. No, he's not my. Best teacher So on many. I He's earth. love teacher this for kind of so many people in Pakistan and All right, India I agree and with you. I'm Canada. totally agree with And you. I'm happy to be your colleague, sir, Seth. And I'm so happy that you have such beautiful emotions for the poor people and the poor children. So why don't you do that? Why you want Guruji, me, or Madam Fatma ji to do what you want to do? This is your choice. You are the one. Because You are the as chosen one simple for in this. theory, I love to listen the good words from good people. And also, I don't have any previous experience about the lectures or anything, articles or anything else. So that's why I suggest other people to talk, and then I will answer. Wow. So और मैं ये No, but चाह रहा हूँ. Sorry for my weak English. I'm extremely sorry for that. no, your English is not weak. That's amazing. what I'm saying. Exactly. Guruji, you tell him that his English is good or not. I'm No, not brother. joking. His English is perfect. Brother, like I've never ever heard this kind of amazing fluent Yeah. English in my life here. And Beautiful. accent is also very clear. Exactly. So clear. Exactly. Thank you very much. Thank you Hmm. very much. Exactly. So, yes, you keep out from this kind of doubts about your English or about any, like, people have whatever the boxes, get rid of these boxes. I used to have that box too, like, I'm like, I got inferiority complex. I used to have, like, oh my God, I don't know how to speak English. My medical college professors from South India speak amazing English. My colleagues, man, from English medium, man, speak amazing English, man. All my life I studied Gujarati medium, my mother tongue, and boom, man, where I've been, I felt like I've been like free radical, right? But it hurts me a lot, it hurts me a lot because All of right. I created that block. I created the block, you know what I mean? Like they are more powerful or they are more superior. I know nothing All about right. English, All right. and I agree with you. You know that those people on Turkish, they just this is it, speak like Turkish, and also whatever. those people in China, they speak Chinese. Yes, Continue, sir. What you're talking about? so absolutely. So everybody has something wall, like I'm too fat, I'm too slim, I'm too dark, I'm too to whatever I don't know English or I know You're little right. English or You're right. I somebody totally know agree with more you. English or somebody wrote more books, I didn't write any books or
somebody got more medals and I didn't get more medals, or somebody ran more marathons, I didn't run a single one, somebody whatever, I'm from somebody developing country, I'm developed country, somebody. So hold your limit, your one small box, the one you created, hold to that image, you know, and imagine that's the wall is representing that one. Like other side of the wall is like the beautiful amazing life. Let's say I don't know the English, or I my English is so poor, then imagine other side is beautiful, like, you know, fluent English, the one you would love to have, that kind of. And that's the wall is right there. Whatever is blocking, just imagine that's the block. And now that's it, man. That's it. That block is gone, everything is You're gone. right. This is it, this is it, man, this is it. Allah gave you that power, God gave you the power, whatever the faith you believe, that give you the power, and that's it. Now you don't see any walls, you don't see nothing, you are unstoppable. You are the lion, keep roaring. You are the lioness, keep roaring. You are the tiger, keep You're roaring. right, You are sir. the tigress, I keep understand. roaring. You are the eagle who is flying all the way to the sky, you know, and आसमान का सीना चीरता हुआ वो ईगल है, वो आप है, वो आप है. Right. Thank you. Thank you very much. This all about the mindset, which the Dr. PP is saying. That's it. That's it. That's it. Beautifully said. Well said. Well said. Mindset. That's it. You cannot grow beyond your mindset. You cannot get success beyond your mindset. Everything, you know, your mind is your best friend, or your mind is the worst enemy. Choice is yours. You're right, And sir. I understand. I want to share the saying of इकबाल, our national poet. बहुत खूबसूरत उन्होंने एक बात कही है कि मतलब we have this power to make our, उसको किस्मत को क्या कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. Radha ke Yeah, Zabardast. That's Jazakallah, good. Jazakallah. One more time, one more Brilliant. time, one more time, Fatima. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. मतलब when the creator of Allah subhanahu wa ta'ala writing on your कि what will happen in future, so वो आपसे खुद पूछे आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में. मतलब आप अपने आप को इतना ऐसे नियर कर लें, उस उरूज पर पहुंच जाएं, इतने नियर हो जाएं कि वो आपसे आपसे पूछ कर आपका जो है किस्मत जो है ना वो क्रिएट करे. क्योंकि हम कहते हैं ना हर कुछ तो पहले से प्लान होता है, अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में लिख दिया हुआ होता है. लेकिन वी हैव दिस पावर, इकबाल सेड, कि हम अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, हम अपनी किस्मत खुद क्रिएट कर सकते हैं. ये अपने सेल्फ बिलीफ की बात है. We must have the belief on our Almighty Allah. Then second, we have to believe on ourselves. Then we can do whatever we want to do. Very You're simple. right. Well said, very well said. Beautiful, Fatima. Shukriya. So you are asking about the what the simple action we did for क्या था आपका question, Dr. PP? Yeah, Fatima, what's one thing you're going to do towards a betterment of environment? Actually, so many things That's I the am thing, doing. Fatima. You see, I know. Our heart is so big. You know, we wanna do this. You know, I'm like that too. I'm like that too. That's why I asked the particular specific question at the specific platform, torch environment, to the specific person, which is you, Fatima. Okay, as you know, I'm creating the awareness and I'm working in a school, so I'm dealing with the small kids. As Abbas is saying, कि if we really want to be changed, to be working on the new generation. So this year, when I am planning and we are working, so I have the wonderful idea which I explain in front of my students. I tell them the healthy food and the unhealthy food, the junk food. So usually small kids used to bring the junk foods. It's easy for their moms to send with him to school. Chips, biscuits, like these type of things. So on a daily basis, we have got a lots of wrappers.
So I usually talk about in the news period, very first when interact with my students. So I give the warm welcome and interact with the nice words or get know how they are spending their time at home, or tell us about the healthy food and unhealthy food. So I tell them the story about how the small kid can observe the society, how I can a way to be about the problems of the society. So मैंने उनसे सवाल किया कि जब आप घर से यहाँ तक आते हो स्कूल से, तो what have you observed in the way you're observing the tree, the flower. तो हर students ने every student tell me about tell us about their observations. So many one student said I went visit to the sea view on the weekend और टीचर वहां बहुत पानी था, देयर आर अलर्ट्स ऑफ वाटर. मैंने कहा ओके, और टीचर वहां पे बहुत सारा कचरा था. तो स्टूडेंट रोजाना रोजाना बात करने से ना द स्टूडेंट इज एबल टू डिस्कस देयर ऑब्जर्वेशन. मैंने कहा ओके, वहां बहुत सारा कचरा था, तो वो कचरा कहाँ से है. फिर मैंने उससे बात शुरू करी तो बच्चे अपने अपने से बताने लगे. तो फिर मैंने उनसे कहा यस, नाउ द गार्बेज, द rappers has become the monster. It is everywhere. He is destroying our environment. So we need to, what should we do? सबने कहा यस. तो बच्चों ने अपने अपने समझ से बताया हमें इसको डस्टबिन में डालना चाहिए ये वो. तो फिर सडनली I got this idea. So you can see I have this bottle. So anybody can tell me what you can see and what do you understand through this bottle. आप इस बोतल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? यस यस अब्बास जी. अब्बास, इसके अंदर आपने रैपर्स डाले हुए हैं और एक ही जगह जमा हो गए हैं रैपर्स बॉटल के अंदर. बहुत अच्छा आइडिया है ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है. इट्स वेरी एक्सीलेंट आइडिया और इट्स वेरी नाइस थिंग यू आर टीचिंग द चिल्ड्रन. वाओ, अमेजिंग, थैंक यू. so through the story I tell my students we are going to lock up the monster in this empty bottle, so we can, because this is small action, we can reduce the plastic and the wrappers as individual. So we cannot it's difficult to students ke how we dump our garbage, what is the solution. So I got this idea that I can aware my students, also they can reduce to eat the junk food as well, but it takes time. But when they have and how we can go to the zero waste, हम zero waste पर तो जाना, it takes time, but we can also create the awareness कि zero waste क्या होता है. But the student can this they know about the monster क्या होता है, जिन क्या होता है, उसको काबू में कैसे करना है, उसके पास हमारा solution क्या है. So when I show to my colleagues and my management, so they are what is this, or I really appreciate कि Kamal Abbas जो है वो he is getting my idea, but when my colleagues are not getting कि इसके बाद क्या होगा, they have the lots of questions. You know, when I start this activity, तो मेरे पास उसमें मैंने इतना डीप नहीं सोचा था कि उसके बाद क्या होगा. I just tell the story to my students कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इंफरादी एक्शन ले सकते हैं. But I'm searching Hello, are you there? Hello. Hey, welcome back, Saif. Fatima ji, are you there? Hello. I think this is the network issue. Yes, sir. Okay. All right. Sir, I have a Yes. question for you. What do you think about humility? Humility is the best policy, absolutely. And always मैं कहता हूँ, एक सॉन्ग भी था पुराना,
तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ह्यूमैनिटी रॉक्स, राइट? ठीक है ना। आप मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो आपका नाम सैफ पड़ गया, मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ तो मेरा नाम प्रवीण पड़ गया। ठीक है, मैं वो मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ होता तो मैं कोई खान बान होता और कोई मना यू नो, राइट? ठीक है ना, वाइस वर्सा। आप मना वो हिंदू फैमिली में पैदा हुए होते तो भाई भाई कहा जाते, एक्स वाई जेड भाई, लाइक तो यही बात है। तो बिल्कुल। और यस, मैं वी यही हैव टू बी यू कैन प्राउड। कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। हाँ जी, वी हैव टू बी प्राउड ऑफ आवर रिलीजन, एब्सोल्युटली, जहाँ पैदा हुए हैं हमारे पेरेंट्स, हमारा बिल्कुल देश, डेफिनेटली, राइट। मगर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन, वी आर द ग्लोबल फैमिली, लाइक वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा माना द वर्ल्ड, कुटुंब माना फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली, वी आर द यू राइट। वन फैमिली, ठीक है ना। तो बाउंड्री, बाउंड्री किसने बनाई? आपको वो बता रहे थे, सही बात है कि बाउंड्री बनाने वाले हम है। ऊपर वाले ने तो पूरी कायनात बनाई थी, पूरा यूनिवर्स बनाया था। यूनिवर्स को हमने बांट दिया कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट्स को बांट दिया हमने देशों में, कंट्रीज में। Countries we divide into states and districts and county and talukas and villages and cities, into streets, into homes, and so, like, yeah, तो वही है, right? That's so, this internet, through social media, like, we broke this boundary, like Rehanallah wala, what Rehanallah wala is doing is breaking the boundaries, what Torch is doing is breaking the boundaries. Look at that, like Mama Lin found Torch. Right now I am born in India, living in Canada, you are from Pakistan, and we are talking like a brother, like Fatima was there, Yes, sister we Fatima are was brothers. there. We are brothers. You're right. Absolutely, And I'm हमारे, totally agree with you. I'm totally agree with exactly. you. And especially, I, like, यही अवेयरनेस generation, पैदा करनी है our लोगों में, यही generation, अवेयरनेस पैदा करनी है। सही yes, फरमा रहे like हैं आप। our generation or my previous generation, they have those baggages more than your generations, or the generation coming after you guys. They don't have that many baggages, like our generation. So, they have the baggages, like, India, Pakistan, Pakistan. They witnessed them, or they heard them, or they born around this era. So, their parents or they throw this kind of, what I mean. We have a little bit of baggage about that one, and you don't have that much baggage compared to our generation have, and vice versa. Like the new generation, they don't have that much baggage, right? So that's Right. about it. You're And right. like, your blood is red, my blood is red, right? When Nana Patekar's dialogue, in Krantivir, like, ये हिंदू का कौन है, मुसलमान का कौन, बता उसमें कौन सा हिंदू का है, कौन सा मुसलमान का है, बिल्कुल सामने बिल्कुल। नाने वाले ने कोई। You're तो right. वही है। एंड अल्टीमेटली एवरीबडी वांट सेम थिंग, सब पीस चाहता है, सब मैंने पीस ऑफ माइंड चाहता है, सब एवरीबडी लव देयर फैमिली, और फैमिली की, अपने बच्चों की वो सेफ्टी चाहता है। अल्टीमेटली वो गोल वही है। मगर हम डिवाइड हो गए, तो डिवाइड से माना यूनिफाई होना है हमें, प्लेनेट यूनियन बनाना है। हालांकि यहाँ मैंने शुरू किया है प्लेनेट यूनियन, तो वही है, राइट? ठीक है ना। दैट्स वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसमें भी मेरा धर्म बड़ा तेरा छोटा, ये सब वो सब क्यों यार, लाइनें छोटी, अपनी लाइन बढ़ाओ ना यार। लेकिन एक मैं पढ़ता था तो इसमें एक लेसन आता था कि टीचर ने एक 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन बना दी, ठीक है ना, वो ब्लैक बोर्ड पे चॉक स्टिक से, और बच्चों को बोला कि इस लाइन को छोटी बनाओ। तो वन बाय वन बच्चा उठता है, और वो उसको मैंने इरेज करता है हाथ से, डस्टर से, वो कागज लेके, राइट, एंड फाइनली एक बच्चा उठता है, फाइनली टीचर का फेवरेट स्टूडेंट, और उसने उसके नजदीक में दूसरी 11 सेंटीमीटर वाली लंबी लाइन छोड़ दी, तो ऑटोमेटिक वो लाइन छोटी हो गई, उसको मना इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो हम अपना दायरा बढ़ाए, अपना एक्सपांडेड हॉराइजन्स, हम अपना हॉराइजन्स बढ़ाए। लाइक मैं मेरे गांव में था, तो इसके बाद मैं वो 11-12 में वो अहमदाबाद में गया, हॉस्टल में गया, तो लगा कि वाह यार, ये तो बड़ा है यार, नॉट ओनली हिंदुइज्म, तेरा लाइक मैंने चर्च भी देखा वहां पे। मैं मेडिकल कॉलेज में गया, तो वहां मना मुस्लिम फैमिली के फेलो भी देखे,
क्रिश्चियनिटी के फेलो देखे, तो मेरा दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया। यहाँ पे आया, टोरंटो में आया, तो मैंने पूरा दुनिया यहाँ पे टोरंटो में समा गई। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री का बंदा यहाँ पे है, तो वही है। सो मोर वी कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअलिटी, अपना हम हॉराइजन बढ़ाते हैं। तो दैट्स इट, हम ही जो दुनिया दिखाई रही है वो हम अपनी नजरों से देखते हैं। अल्लाह ताला की नजरों से देखे तो दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है ना। तो यही बात है। तो सही बात है, हम, बिल्कुल। हाँ जी, वो 6 और 9 जैसा है यार, आपको 6 लगता होगा, मेरे को 9 लगता होगा, मगर मैं आपकी जगह पे अरे आऊँ तो लगता है कि यार सही बात है, आप क्यों मैंने 6 कह रहे हैं। आप मेरी जगह पे आओ तो आप कहोगे कि भाई मैं 9 क्यों कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट्स वही गुड। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। एंड आर्ग्यूमेंट में क्या रखा है यार, एक जमाना में मैं भी था यार एग्रेसिव, यार ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, ये सब वो सब यार, ये 1 और 1 मैं 2 बोल रहा हूँ, बिल्कुल, आर्गुमेंट इज नथिंग। है, ठीक है ना। तो ऐसा था, हम कभी कभी वो उम्र का तकाजा आपको उस लेवल पे ले आता है कि भाई यार मैंने जो प्रीवियस किया वो सब यार वेस्ट ऑफ टाइम था, वेस्ट ऑफ एनर्जी था, वेस्ट ऑफ ये सब था यार, कि भाई यार कभी कभी वो लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स आपको आते हैं, वो मन आपको वो रियलिटी चेक के लिए आते हैं, ठीक है ना। मगर अगेन लाइक उससे आप सीखते हो कि नहीं, कि यू आर डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, वो तो स्टुपिडिटी हो गई ना, राइट। हाँ, तो हम बिल्कुल, ह्यूमन, हाँ जी, you're right. तो वही है। एंड विधिन जाओ यार, अपने अंदर पूरा समंदर है यार, पूरा समंदर है। यस, हम मास गुरुद्वारा चर्च टेम्पल जाए, मगर हमारा जो बॉडी है वही सबसे बड़ा मास्क है, वो सबसे बड़ा काबा है, सबसे बड़ा चर्च है, सबसे बड़ा टेम्पल है। विधिन हम डाइव करोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि यार पूरा समंदर हम बाहर देख रहे हो, वो तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू लाइक हमारे अंदर जो समंदर पड़ा है यार। बिकॉज वही है हमारे अंदर जो बैठा है, वो ऊपर वाला ही है जो आपके अंदर ही बैठा है। नमस्ते का मतलब क्या है? नमस्ते का मतलब बहुत बढ़िया है। नमस्ते का मतलब यह है कि आई रिस्पेक्ट जो क्रिएटर है, जो आपके अंदर बैठा है, वो मेरे अंदर भी बैठा है। व्हेन यू आर इन दैट प्लेस, आई एम इन दैट प्लेस, वी आर वन। All right. हाँ जी यार, हाँ जी। और आई लव आस्क 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 Jack Canfield, the secret movie star, and the Chicken Soup for the Soul guy always say, ask, ask, ask. पूछते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। हालांकि ये आपको जो जवाब चाहिए वो न भी मिल सके, पूछते रहना चाहिए जब तक आपको आपके क्वेश्चन के सवालात के आंसर न मिल जाए। हम सीकर बहुत हैं। अच्छी बात की है आपने डॉक्टर पीपी भी, एग्री। बस मैं इसमें एक चीज शामिल करना चाहूंगी, जैसे आपने 6 की एग्जांपल दी कि 6 आपकी नजर, आपके साइड से वो 6 है और मेरी साइड से वो 9 है, तो देयर इज नो नीड टू बी आर्ग्यू, देयर इज नो नीड टू बी डू द फाइट। बट मैंने जितना लोगों से बात की और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी मैं शायद गलत हो सकती हूँ, मुझे एक बात ये समझ में आती है कि वाई वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल, हम लोगों को ऐसे क्यों नहीं कबूल करते कि जैसे वो जैसे यू आर द डॉक्टर पीपल, यू डोंट नीड टू बिकम द फातिमा, आई एम फातिमा, तो आई एम ओके। Exactly. All right, Yeah, that's good. absolutely. मेरी Yeah. पर्सनैलिटी है, जो मेरी वो है, तो एवरीबडी शुड एक्सेप्ट मी लाइक एज आई एम। सो अगर हम एक दूसरे को जो जैसा है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कर लें, उसे कबूल कर लें, उसे अपना लें, उसके साथ डेवलप कर लें, रिलेशन डेवलप कर लें, जो भी फ्रेंडशिप है, जो आप कुलीग हो, आप नेबर्स हो, आप फ्रेंड्स हो, सो वी डोंट नीड टू बी चेन टू ईच अदर when the Absolutely. understanding is developing. So if I observe, I will understand कि जो पीपी डॉक्टर पीपी ने ये बात बोली है, ये 100 में अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, आपने बार बार एक बात बोली तो मुझे लगा कि नहीं, he is right. When I become on that point कि I observe, I totally agree with you, so then automatically I will adopt that thing. But we don't need to be forced to each other. एक, Exactly. और Absolutely. जैसे मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती, जैसे लोग कहते हैं कि तो आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, ये क्या डिप्लोमेटिक है? इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए ना, राइट एंड रॉन्ग अल्लाह ताला ने इट इज द नेकी और बदी और सही और गलत तो ये है। अगर फरिश्ता और शैतान
मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं ना, ये कोई वो इट्स नॉट द स्टोरी कैरेक्टर, इट्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. सो इट्स हो सकता है कि किसी एक कन्वर्सेशन में किसी एक पॉइंट पर कोई एक बंदा सही हो, कोई एक बंदा गलत हो, बट सही वाले बंदे अगर वो सही है ना, तो उसको भी डोंट नीड टू बी डू अलॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट और उसको बार बार कराने की कि आप गलत हो. क्योंकि लेकिन जो सच और हक होता है, जो सही बात और होती है, वो आफ्टर द पासिंग द टाइम और कुछ, जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने आपको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया और आपने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइम गुजरने के बाद ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हम रिसर्च करेंगे, हम एक उस पॉइंट पर आ जाएंगे, हम खुद ही अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑन दैट टाइम क्या चीज गलत थी. सो मेरा मानना ये होता है, मतलब मैं इसको नहीं मानती कि एक ही उस पर ना सब सही हो सकते हैं. ये मतलब मैं कह देती हूँ कि यस यू आर राइट, क्योंकि इट इज द वे टू टॉक, टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन. कि ठीक है, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ, ठीक है डॉक्टर बीबी, आपका नुक्ता नजर बिल्कुल दुरुस्त है, मगर उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी. तो दिस इज द वे टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन. बट जैसे बहुत सारे मैंने लोगों को कहा है कि नहीं, हर कोई हाँ, इसमें एक बात और है कि वी नीड टू बी अंडरस्टैंड द अदर, जो भी साइड का जो बंदा है उसके नुक्ते नजर को वी नीड टू बी अंडरस्टैंड कि वो किस पस मंजर में उस बात को कह रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है. क्योंकि आप बात कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, मैं बात करूंगी जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे पढ़ाया गया. ठीक है ना. तो हर बंदा अपने, आपका एक्सपीरियंस दूसरा है तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग भी डिफरेंट होगी. मेरा एक्सपीरियंस दूसरा है तो मेरी लर्निंग भी डिफरेंट होगी. इसमें सिंपल एक चीज बस सिर्फ ये है कि डोंट डीमोटिवेट टू अदर और डोंट डू डी रिस्पेक्ट. अदर कोई कितना ही मुख्तलिफ है, अदर कोई कितना ही गलत है, वी डोंट नीड टू बी जज एंड वी डोंट नीड टू बी डू द, हम फैसला सुना देते हैं ना कि ये गलत है और ये लाइक, मतलब इस चीज से हमें अवॉइड करना चाहिए. क्योंकि वी आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर आर एक्शन, आर इंटेंशन. मैं अपने एक्शन की जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी नीयत की जिम्मेदार हूँ, मुझे अपने अमाल का जवाब देना है व्हेन द डे ऑफ द जजमेंट, व्हेन वी अपीयर इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला. जिसके जो भी बिलीव है, आपका जो बिलीव है, तो आपका जो रिलेशन है विद अवर योर बिलीव, और जो भी और जिस पर आपका ईमान है, जिसको आप भगवान मानते हैं लाइक दिस, तो वो आपका और आपके भगवान का मामला है. एज मुस्लिम आई बिलीव दैट जो भी इस दुनिया में आया है, ब्रिंग विद द गुड सोल, अच्छी सोल के साथ आया है. एनवायरमेंट अगर वो उसका एक्शन बुरा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बस जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल हाउ ट्रीटेड देम, लोगों ने उसको कैसे ट्रीट किया, तो जो लोगों ने उसको ट्रीट किया है तो वैसे ही उसने लर्न किया, वैसे ही वो रिफ्लेक्शन कर रहा है. हमारे जो एक्शंस होते हैं, जैसे आप अगर मुझसे पोलाइटली वो करोगे तो डेफिनेटली आपको पोलाइटली आंसर मिलेगा. अगर आप मुझसे इफ यू आर्ग्यू और रूडली आर्ग्यू और वो करोगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट पर आकर मैं भी आपको उसी तरह से जवाब दूंगी. ये नेचर है इंसान की. और जो इस नेचर को, इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखते हैं. व्हाट इज यू, आप कितना ही मुझे कुछ हेलो आई हैव व्हेन आई एम द सोशल मीडिया में, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द कंट्रोल ऑन माय इमोशंस. मतलब कोई सामने वाला कितना ही गलत बात कह रहा हो और किसी तरह से भी वो कर रहा हो, आई नाइसली आई डील विद देम. मतलब मैं कर लेती हूँ. मैं वो नहीं हूँ जो सामने वाला जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है. मैं तो फातिमा अजीज हूँ, मेरे साथ मेरी कुछ तरबियत है, मेरे वालिद की मेरी कुछ तालीम है. आई एम द एम्बेसडर ऑफ माई कंट्री, माई रिलीजन, माई फैमिली, इट्स माई सेल्फ एज वेल. सो मुझे किस तरह से रिएक्ट करना आई नो वेल. सो आइदर द सामने व्हेन आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी अपनी जिंदगी में किसी जूइश से बात करूंगी मतलब किसी हिंदू से बात करूंगी. अच्छा मैडम, एक सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतना नॉलेज रखते हैं, तो आप क्यों नहीं सोच सकते थे, क्या हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूइश से बात नहीं की थी? नहीं की होती तो फिर तबलीग कैसे होती? इस एस्पेक्ट से नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ मेरा जो कनेक्शन था, जो मेरी जो दायरा कार था, मैं बहुत अनसोशल एक पर्सन थी,
सो जाहिर सी बात है मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी जिंदगी में इतना मेरा वास्ट कनेक्शन होगा, मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स होंगे। इवन दो सोशल मीडिया तो दूर की बात है, मैं तो फोन पर भी इतने लोगों से जो मुझसे कनेक्टेड थे, लोग ही कनेक्ट होते थे, मैं नहीं किसी से कनेक्ट होती थी। मेरा दायरा कार मेरे स्टूडेंट, मेरे पेरेंट्स, माय फैमिली, माय नेबर्स, माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मतलब मैं उनमें तो अगर आप मुझे फातिमा अजीज को ढूंढेंगे तो आई एम वेरी मच पॉपुलर, आई एम वेरी मच इंटरेक्टिव पर्सन। बट मैं मतलब जो जिनसे या ये हमारी या मेरा इस तरह के माहौल में मेरा ब्रॉडअप हुआ, या मेरे वालिदैन ने मुझे इस तरह से कहा कि अजनबियों से बहुत ज्यादा मतलब हमने ताल्लुक नहीं रखना, क्योंकि हमें नहीं। और हकीकत है, जब व्हेन यू आर द चाइल्ड, आप भी अपने बच्चे को क्या बोलोगे। जैसे अब मैं अपने नेफ्यू के साथ होती हूँ, मेरा नेफ्यू जो है वो 2 साल का है। सो माई सिस्टर इज आल्सो द वर्किंग लेडी, सो एंड ही लिव इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। सो आई ऑब्जर्व, मैंने कहा भाई इसका तो एक्सपोजर नहीं होगा, तुम इसको लोगों से मिलवाती नहीं हो, लेकर नहीं जाते हो। तो आई टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज द कोरोना, तो एवरीथिंग इज स्कूल वर्क क्लोज, और ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सो मैं उसको डेली पार्क लेकर जाती थी। अगर आप उससे मिलोगे, वो आपको कैसे कहेगा, वेव करेगा, हेलो कहेगा, और जब वो आपसे जा रहा होगा तो आपको कहेगा लव यू। मतलब उसे कुछ नहीं बोलना आता, मगर उसे मालूम है हाउ टू इंटरेक्ट द पीपल। उसको नहीं पता स्ट्रेंजर है, क्योंकि हमने उसको ये नहीं बताया। तो मगर मैं, हमारे पेरेंट्स हैं, और जाहिर सी बात है हम एक लड़की हैं, एक वालिदैन को क्या होता है कि अगर बच्चा आपने बल तो हम अकेले कहीं जाते ही नहीं थे ना, तो एक फैमिली का भी वो होता है। अब मेरा जो नेफ्यू है वो पार्क जाने की वजह से ही इज बिकम द पॉपुलर किड इन माय कम्युनिटी पार्क, और हर एक से उसका इंटरेक्शन है। इवन वो जब वॉक भी कर रहा होता है मेरे साथ, 2 साल का है वो, वॉक करने में भी मतलब स्लो स्लो बच्चा किस तरह से वॉक करता है, तो वो हर आते जाते को, चाहे उसे कोई बूढ़ा नजर आए, कोई वॉक करता हुआ कोई बंदा नजर आ रहा है, कोई शॉपकीपर नजर आ रहा है, तो उसको वेव करता है, वो लोगों को स्माइल पास करता है और वेव करता है। तो ये तो That's good. आपने जो कहा कि क्या हमारे, नो, अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर गिव मी दैट बेसिक नॉलेज आई हैव फ्रॉम माय चाइल्डहुड। आई हैव द क्रिश्चियन फ्रेंड्स एंड आई हैव द वेरी गुड रिलेशन। सो मुझे कोई मतलब, वो तो मेरे स्कूल में ही पढ़ते थे, तो मेरा उनसे इंटरेक्शन है, आई बिकम द फ्रेंड ऑफ हिम, फ्रेंड ऑफ देम। बट ये सोचना कि मैं मतलब जाहिर में ट्रैवल नहीं कर रही, मैं कभी आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से बाहर नहीं गई, मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो मेरा अपने ही शहर में है, सो मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, सो दैट्स वाई। और अगर मैं बाहर जाऊं, अगर मेरी प्लानिंग में ऐसा होता कि मुझे अब्रॉड जाना है या कहीं जाना है, या मेरा एक्सपोजर होता, तो दैट डेफिनेटली आई विल बी मीट द क्रिश्चियंस, और बहुत सारे हमारे इंडिया में रहते हैं। जी जी बिल्कुल मैडम, आपने ठीक कहा। लेकिन मेरी सिस्टर कैनेडियन है और वो मुझसे छोटी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। वहाँ भी वो भी यही कहती हैं कि कनाडा के अंदर भी जो मुस्लिम्स होते हैं वो मुस्लिम्स के अंदर ही रहते हैं, हिंदूज होते हैं हिंदूज के अंदर रहते हैं, मेजोरिटी में। मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं कह रहा, एक ह्यूमन नेचर है। जी और एग्जैक्टली। वहां पे रहते हुए आप कह रहे हैं आप बाहर नहीं गए, आप तो ज्यादा आज के जमाने के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो ज्यादा एडवांस हैं आप वहां के लोगों से। जो मेजोरिटी में वहां पे लोग हैं अंग्रेज, वो मुसलमानों के बीच में नहीं जाते, बहुत कम है आज भी जो घुलते मिलते हैं। और आई थिंक मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर मैं वाकई मुसलमान हूँ तो मुझे ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मुझे नहीं कन्वर्ट कर सकता, ना ही मुझे किसी को कन्वर्ट करना है। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा मैडम, हाँ आपका तो माशाल्लाह एग्जैक्टली। आपने बताया कि आपके फादर भी लीनियंट हैं और बचपन से स्कूल में भी हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड के साथ आपकी दोस्ती रही। तो वो ये तो इस्लाम में है कि सबके साथ रवादारी रखनी है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि हम लोग बेसिकली, अब जैसे कनाडा में मैंने कहा वहां पे भी हमारे लोग जो हैं वो अपनों में ही रहते हैं, दूसरों में नहीं घुलते मिलते। तो हमें पता कैसे चलेगा? हालांकि कुरान, क्योंकि मैंने बहुत ही बचपन में हमारे फैमिली में कल्चर है, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ कि बहुत अरबी में बहुत जल्दी हम मुकम्मल कर लेते हैं और उर्दू में फिर हम पढ़ते हैं। तो मैंने 7 बार तकरीबन उर्दू में मुकम्मल किया है कुरान, अरबी में तो बहुत ही छोटी एज में कर लिया था। तो उसमें मैंने काफी दफा मेरी नजरों के सामने से ये आयत गुजरी और अल्लाह का एहसान है, करम है कि ये एक नजर में आई।
चीज कि दूसरों के मज़ाहिब की इज्जत करनी है, प्लस गौर व फिक्र करना है, प्लस दूसरों के मजहब को भी समझना है मुकम्मल मुसलमान बनने के लिए। तो अब जब हम उनमें घुलेंगे मिलेंगे नहीं, जो लोग हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी रहते हैं, मुस्लिम्स और हिंदूज और क्रिश्चियंस और जूस, तो फिर कैसे एक दूसरे के मजहब को समझेंगे? तो ये एक चीज जरूरी है, और मैं बहुत ऑनर्ड और प्रिविलेज्ड फील करता हूँ कि आप, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू हैव टेकन दिस स्टेप, और आप जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि किसी इंटरफेथ के पर्सनालिटी से बात करेंगे। आज आपने कितने सारे लोगों से इतने अरसे में जो आपने मेहनत की है, तो हैट्स ऑफ टू यू मैडम, कि आपने अपने 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 आप को ट्रांसफॉर्म किया है। और ये बहुत अच्छी बात है। आई मीन वी आर प्राउड टू हैव यू, एंड आपने बहुत काम किया है अपने आप पर, और इसीलिए सोसाइटी में भी फायदा हो रहा है आपकी वजह से। आप ओपनली सोचते हैं, आप इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी तरह और भी हमारी खवातीन को सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए। थैंक यू यस। सो मच। मगर आपने ये ठीक कहा कि चाहे कनाडा और ये है, लेकिन इसमें ये चीज होती है कि वी आर नॉट रेडी टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन। सो दैट्स वाई देखें, ये इसलिए होता है कि हम अगर नए लोगों से मिलेंगे तो हमें थोड़ा सीखना, लामहला हमें सीखना पड़ेगा उनका, मतलब उनको समझना पड़ेगा। जब आप इंटरेक्ट करेंगे डिफरेंट पीपल है, तो आपको जाहिर है आपके लिए आप किसी अपने जैसे से अपने सेम सिटी सेम कंट्री और सेम बिलीव वाले से मिले तो देयर इज ज्यादा सोचने की बात उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जब नए बंदे से मिलोगे तो अगर वो ये कह रहा है तो उसका क्या मतलब है, अच्छा उसको उस तरह से जवाब देना है। सो दैट्स आई वी डोंट, लेकिन ये इंसानी नेचर भी है। जैसे अगर आप एनिमल्स को भी तो देखें ना, तो वो भी ग्रुप में ही रहते हैं और अपनी फैमिली में भी रहते हैं, तो ये एक नेचर भी है। लेकिन उसको मतलब लेकिन हमने और एनिमल्स मतलब वो तो इंसान नहीं है ना, तो आप कंपेयर कैसे कर एग्जैक्टली रही हैं? नहीं, बट देखिए ठीक है। फैमिली, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो सेम कम्युनिटी भी अगर फैमिली है तो हमें हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए पूरी वर्ल्ड जो है ना, ह्यूमन जो है, वी हैव द वन सेम कम्युनिटी। सो अगर आप इसको इस तरह से ले लेंगे तो कम्युनिटी ह्यूमन कम्युनिटी, सो वी कैन एडजस्ट एनीवेयर। एग्रीड, एग्रीड, सो उसको इस तरह से लें, क्योंकि ये नो एग्रीड डाउट 110%। कि वी आर द सेम कम्युनिटी। जैसे हम कहते हैं फैमिली, वी आर द टॉर्च फैमिली, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि टॉर्च फैमिली के मेंबर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सो वी आर फैमिली ना, दिस वर्ड इज अ वंडरफुल वर्ड। सो जब आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं और फैमिली, वी आर द फैमिली मेंबर्स और वी आर वेरी एक्सेप्टिंग। ट्रू। और जी जी, जी मैम कहें, प्लीज गो मैंने अहेड कहा मैम। तो फैमिली मेंबर के तौर पर हर एक को हमने कबूल किया हुआ है ना। सो मैंने सिर्फ डॉक्टर प्रवीण की उस बात से कि 9 को और 6 को, लेकिन सिर्फ मैंने ये बात कहना चाही थी कि सम टाइम हम गलत, कोई भी गलत हो सकता है और कोई भी सही हो सकता है, बट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड, और हमें एक दूसरे को टाइम और स्पेस देने की जरूरत होती है। फिर हम वो जो है, जैसे अगर मैं अपने शहर कराची को देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि इट्स द मिनी पाकिस्तान। सो यहाँ पे सारे कल्चर, अगर जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा कन्वेंस में बात करूँ, सब लोग रहते हैं। तो मेरे जो और फ्रेंड्स हैं जो मुल्तान के हैं, अब मैं पाकिस्तान के हर शहर के लोगों से इंटरेक्टेड हूँ, मुल्तान है, लाहौर है। सो मैंने ऑब्जर्व किया कि कहाँ के लोग ओपन माइंड के होते हैं, कहाँ के होते हैं। तो मगर उन लोगों ने एक बात की, सब लोग ये बात कहते हैं कि कराची वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कराची वाले बड़े एजुकेटेड होते हैं। हालांकि कराची के साथ तो बड़ी बहुत ज्यादा मतलब कुछ मिसहैप्स हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी द पीपल, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी आर द कनेक्टिंग टू ईच अदर, वी आर शेयरिंग टू अवर thoughts, or so they the other cities of the यस। people find that the Karachi people are very lovely and very peaceful या, and very open mind एग्रीड, and very educated. So एग्रीड, एग्रीड वो मैडम। बहुत लेकिन जरूरी यहाँ है। पे कराची का जो स्टाइल है, हमारा जो तरीका है बात करने का, एक यूनिक स्टाइल है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली। परसेप्शन ऐसा जाता है पूरे पाकिस्तान को कि कराची वाले बड़े तेज होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो कराची वालों से ज्यादा अच्छी लाइफ गांव वाले गुजार रहे होते हैं। इनफैक्ट इस्लामाबाद के शहर में जिस तरह की आवाम रहती है, वो भी यही कहते हैं कि कराची वाले बहुत
इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मेरी नजर में इंटेलिजेंट वही है जिसकी लाइफ अच्छी गुजर रही है। तो आई थिंक एग्जैक्टली। इस्लामाबाद वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, फेमस नहीं है इंटेलिजेंस में। जिस तरह आपने कहा कि कराची में नहीं पाकिस्तान है, बिल्कुल सही है। फैसलाबाद एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो रजिस्टर्ड फैसलाबाद है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन कराची में फैसलाबाद से ज्यादा आज काम हो रहा है टेक्सटाइल का, लेकिन वो अननोन है। इसी तरह सियालकोट स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, लेकिन आज आप नोटिस करें तो कराची में ज्यादा स्पोर्ट्स का काम हो रहा है। यहाँ पे तो हर चीज की फैक्ट्री, यहाँ पे हर चीज की इंडस्ट्री है। और लेकिन पूरे मुल्क में, फिर मुल्क से बाहर भी सियालकोट फेमस है, क्योंकि पहले वही था और वो अब तक उनके नोट्स में, उनके रजिस्टर्स में, उनके डेटा में सियालकोट का ही नाम लिखा है, इंटरनेशनली भी। तो कहने का मकसद है कराची बहुत आगे जा चुका है। लेकिन यही है कि मैं नहीं समझता हमारी लाइफ, हाँ कराची इंजन की तरह है कि पूरे पाकिस्तान को अगर चलाता है, तो जाहिर सी बात है गर्मी भी इसमें ज्यादा होती है, धुआं भी इसमें से ज्यादा निकलता है। लेकिन मैं नहीं समझता हम इंटेलिजेंट है। अगर हम इंटेलिजेंट होते तो सारे वो काम कर रहे होते जो आप कर रहे हो। इस्लामाबाद बना चुके होते, हम लाहौर बना चुके होते, या दूसरी सिटीज। जितना जैसे बारिश हुई, तो हम कैसे इंटेलिजेंट है कि हम बारिश में घरों में जाके छुप रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोल पे की वजह से जानवर और इंसान मर रहे थे, जबकि इस्लामाबाद वाले बाहर एंजॉय करने के लिए निकल रहे थे। तो ऐसे तो अगर इंटेलिजेंट होने का कोई फायदा नहीं है। मतलब लाइफ माशाल्लाह उन्होंने एंजॉय की है इसी बारिश में, जो पिछली बारिश हुई थी, इसमें वो लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने एंजॉय किया है। और जबकि एज कम्पेयर कराची को आप देखें, तो लोगों को अंदर भागना पड़ा घरों में, क्योंकि रोड्स भर गए थे। इस बार तो डिफेंस जैसा इलाका कराची का वो भी भर गया, वो लोग भी बाहर आ गए, और उन्होंने भी तो वो धरना वरना दिया और जो भी किया, जो कि उनको पहले देना चाहिए था, जब गरीब इलाकों में अक्सर पानी भरा करता था। लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था उनके यहाँ, और हो गया क्योंकि पानी जाने का रास्ता नहीं था, क्योंकि ग्रेजुअली इस तरह के ब्लॉक्स बन गए वहां पे जो कि नजर नहीं आ रहे थे। वैसे तो बड़ा कुशादा है डिफेंस, और मुझे भी पसंद है, लेकिन वहां पे ऐसा हो गया। तो कहने का मकसद है, ऐसी इंटेलिजेंस किस काम की है? इस नाम के भरम, वो जो कराची का एक वर्ड है, हम भरम में ही हैं बस। भरम में जिंदगी गुजार रहे हैं, और फालतू का भरम है, तकब्बुर है, अना है। लेकिन इंटेलिजेंस आई डोंट थिंक है। बातों में जीत जाएं, या किसी को बगैर दलील के और सिर्फ बातों से हरा दें, तो हाँ उसमें हम शायद आगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि हम इंटेलिजेंट हैं। एक्चुअली जो माय फ्रेंड इज गिव देयर कॉम्प्लीमेंट बिकॉज के वो ये ऑब्जर्व करते हैं जैसे जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन है ना, जैसे आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर अगर हम उसको डिस्कस करें तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हमारी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल वेज, और उन्होंने एक साइकोलॉजिकली जो है इफेक्ट डाला लोगों के अंदर। क्योंकि देखिए जिस किस्म का एनवायरनमेंट होता है ना, उसी तरह के लोगों की साइकी बनती चली जाती है। जिस लेकिन तरह से गवर्नमेंट तो बहुत गिने चुने लोग होते हैं, एनवायरनमेंट तो आवाम से बनता है, और एग्जैक्टली आवाम मैं यही मासेस बता रही में हूँ ना, इसमें मिनी पाकिस्तान मतलब अब जो यहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ है उसको सिर्फ कराची वाले नहीं बना रहे ना, सारे एक वो कॉम्बिनेशन बन गया है। तो जिन चीजों की तरफ आपने शायद ये करें वो भी हकीकत है, उससे भी हम लेकिन डिफर नहीं आपकी कर बात सकते। सही है। अगर कुछ अरसे पहले तक की बात करें, लेकिन इस वक्त तो हर सिटी में आप जाएंगे तो यही हर तरह के लोग हर सिटी में। लाइक लाहौर में भी, अब तो फैसलाबाद में भी पहले जैसा फैसलाबाद नहीं है, ना लाहौर है, ना इस्लामाबाद है, पिंडी है। इनफैक्ट हर शहर में मिक्स लोग हैं पाकिस्तान में इस वक्त। कराची सिर्फ फेमस है कि इंटेलिजेंस के लिहाज से और हब। लेकिन हाँ, मिनी पाकिस्तान कराची जरूर है, क्योंकि मैं इसलिए मिनी पाकिस्तान समझता हूँ इसको कि ये पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सिटी है। लेकिन मैं उस लिहाज से मिनी पाकिस्तान नहीं समझता, क्योंकि वो बात पुरानी हो गई है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन वो बात पुरानी हो गई कि कराची में पूरी दुनिया से लोग आके रह रहे हैं। वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब तो पाकिस्तान के हर शहर में पूरी दुनिया से आके लोग रह रहे हैं। कराची के कितने लोग इस्लामाबाद में सेटल हो चुके हैं, इस्लामाबाद के कितने लोग यहाँ आ चुके हैं। मैंने सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो मैं एग्री थोड़ा सा नहीं करूंगा, क्योंकि वो डिसएग्री करने का तो राइट है ना मुझे, चाहे मैं गलत भी हूँ। तो लेकिन मिनी नहीं पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल में नहीं ऑन टेस्ट। जी, मिनी पाकिस्तान में इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान आज भी कराची की वजह से
कराची का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची का सबसे बड़ा समंदर है, कराची में हर काम होता है। जो काम कुछ शहरों में होता है, कराची में हर चीज होती है जो पूरे पाकिस्तान में होती है। हर चीज की इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है आज, पहले नहीं थी, आज। इसलिए मैं मिनी पाकिस्तान समझता हूँ, लोगों की वजह से नहीं। दूसरा ये कि कुरान आज जैसे चांद पे लोग चले गए, बहुत सारे साइंटिस्ट मुसलमान हो गए, और शुरू में तो सारे साइंटिस्ट, चाहे वो, क्योंकि सब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ही शागिर्द थे, चाहे वो इमाम हनीफा हो, इमाम हम्बल हो, इमाम मालिकी हो, इमाम सलफी हो, दीनी लिहाज से, शरीयत के लिहाज से, या फिर जाबिर बिन हयान हो, इब्ने बतूता हो, अबू अली सीना, यानी जितने भी साइंसदान भी जो थे वो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे। तो ये तो बाद में हमारे दूसरे भाई आए दूसरे मजाहिब से। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि अब देखें तो नॉन मुस्लिम भी इस बात को मानता है कि आप कुछ भी झुटला लेंगे, लेकिन ये एक किताब है कुरान, इसको आप नहीं झुटला सकते। और कुरान में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो हाँ, वो जो exactly. गवर्नमेंट का, जी हाँ, जैसी रियाया होगी वैसे बादशाह होंगे। तो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ फेल हो जाता है, क्योंकि मैं चाहे जैसा भी मुसलमान हूँ, मैं पूरा नहीं उतरता, मैं जानता हूँ इस्लाम के मुताबिक, लेकिन फिर भी कुरान के लिए माँ बाप, औलाद, मेरी जान, मेरी जिस्म, मेरी रूह, हर चीज फना है। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान में जब लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने बज़बानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाजिल फरजम, हमें कुरान हम हमें तोहफतन अल्लाह की तरफ से शब कदर में नाजिल हुआ। उसमें जब लिखा हुआ है कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, तो फिर हम गवर्नमेंट को तो कुछ बोल ही नहीं सकते, हमें ही मजमूई तौर पे सही होना पड़ेगा। वही Yes. बारिश है जिसमें हमारी आवाम मर रही थी, वही बारिश है जिसमें इस्लामाबाद की आवाम, लकीली वो भी हमारा शहर है, हमारा दिल का टुकड़ा है, वहां Hmm. पे लोग एंजॉय कर रहे थे। तो कहीं तो आवाम में गड़बड़ है मजमूई तौर पे, बेहिसी कहीं तो है। जब भी तो आई एम आस्किंग, आई ऑलवेज फोकस ऑन दैट कि वी नीड टू बी अवेयर, वी नीड टू बी एजुकेट द पीपल, कि हमने अपने आप को एजुकेट करना है, अपने उन चीज़ों को फैलाना है जो पॉजिटिव थिंग है, उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो प्रॉब्लम्स हैं, और उसलिए हाईलाइट करना है कि हम उसको सोल्यूशन को ढूंढ सकें। मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूँ इस बात से कि गवर्नमेंट जो है वो, जैसे आम लोग होते हैं, अगर अच्छे आप ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करते तो डेफिनेटली एज पनिशमेंट अल्लाह ताला आपको ऐसे ही लोगों के ऊपर, लोग जो हैं वो आपके ऊपर मुसल्लत कर देता है कि फिर बिल्कुल, आप और भुगतते बिल्कुल, रहें। यानी बिल्कुल। और मैं खुद, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सबसे पहले आगे खड़ा हूँ, और मैं भी मुआशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी अवाम का हिस्सा हूँ। और दूसरा ये कि कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक हैं, जैसे अल्लाह ताला, आप, मैं बिल्डिंग पे चढ़ जाऊं हबीब बैंक पे, और मैं वहां से छलांग लगा दूं, तो अल्लाह ताला मुझे नहीं धक्का दे रहे, अल्लाह तो मना कर रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं हराम है, खुदकुशी नहीं करनी तुमने। लेकिन अल्लाह ने ग्रेविटेशनल सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से मेरे पाँव जमीन पर रहेंगे, मैं अनस्टेबल नहीं होऊंगा, बैलेंस होके चलूंगा। चाहे मैं पतला हूँ, कमजोर हूँ, छोटा हूँ, लंबा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, मैं जमीन से अटैच रहूंगा, जिसकी वजह से मैं हर चीज कर सकूंगा प्रॉपरली। मेरी बॉडी सही रहेगी, मैं सही तरह चल पाऊंगा, बैठ पाऊंगा, सो पाऊंगा, लेट पाऊंगा। तो ये अल्लाह ताला ने ग्रेविटी रखी है जमीन में। अब मैं अभी बैंक पे चढ़ के छलांग मार देता हूँ बगैर किसी सेफ्टी के, तो इसमें अल्लाह ताला पनिश नहीं कर रहे, मैंने खुद ही आ, वो सजा अपने ऊपर मुसल्लत की। इसी तरह वी आर गलत, रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिल्कुल, एक्शन। वी आर, वो जो सजा का कॉन्सेप्ट है, वो तो रोजे महशर ऑब्वियसली, वो भी उसके भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर मेरे साथ, अगर मुझे सजा मिलेगी रोजे महशर, तो वो भी मेरे ही अमल की वजह से मिलेगी, ना कि किसी और की वजह से। तो अल्लाह ताला ने तो कि सिस्टम बनाया हुआ है, और ये इसी तरह का सिस्टम है कि अल्लाह दिलों को मोड़ता है, या हम कहते हैं या मुकल्लिबुल कुलूब, ए दिलों को मोड़ने वाले, ए दिलों को पलटने वाले। जैसे जुनैद जमशेद साहब द लेजेंड फरमाया करते थे कि मेरा दिल बदल दे। तो क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और जाहिर सी बात है उनकी जो कलाम सुन के काफी चेंजेस भी आए हैं मेरे अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर अवामी तौर पे हम अच्छे हो जाएंगे,
तो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, इमरान खान साहब, मुशर्रफ साहब, भुट्टो साहब, जियाउल हक साहब, ये सब फरिश्ते बन जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह दिल बदल देगा ना इनका, हमें पहले बदलना होगा, क्योंकि वो भी इंसान ही है, मतलब वो खुद बिल्कुल हमारे सही साथ। बोला what you are saying. We need to be that कि we have the lots of power. We can work on ourselves, and we can if we know our rights and our responsibility. So the government and any powerful person that like the bureaucrats and the officers, or they all are the servant of the public. So we need to be understand these things. So if we are playing our role actively, we are playing our role responsibly, so they cannot dare to do take any wrong action. Either he is the prime minister of Pakistan, either he is the chief minister of army public, jo army our army. So it's happened because I am agree. But what I raise this point about the Karachi, that it is a city of the amazing people. Like we have Abdul Sattar Idi, Hakim Muhammad Saeed. We are very bold journalist. We are very honest in every field. So that's why we are we are क्या कहना चाहिए उसको, कि हम अभी भी हैं और कर रहे हैं अपना काम। लेकिन कहते हैं ना, एक मछली एक खराब मछली जो होती है वो पूरे पानी को, पूरे तालाब को गंदा कर दी है ना। तो सिचुएशन जो कराची की है ना, वो इस तरह से है। सो आई पॉइंट रेज दिस पॉइंट आई एम बिकॉज सॉरी, मैं फिर आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, मैं गलत होऊंगा, लेकिन डिसएग्री मेरा हक है। हम मछली नहीं है, मछली वाला फॉर्मूला कयास मैं हर जगह नहीं करता, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा कयास भी बहुत कम जगहों पे किया जाता है। अभी मछली और एनिमल्स, ये उनका सिस्टम अलग है, हम इंसान का इख्तियार उसके ऊपर होता है, और मैं खुद बहुत एक अच्छा इंसान नहीं हूँ ओवरऑल। लेकिन कहने का मकसद है, मछली से तो मुझे कंपेयर ना करें या हमें कंपेयर ना करें, तो हम अच्छे होंगे ही नहीं। वो फिर हम उन्हीं पे डाल देंगे कि वो तो वो वाली मछली खराब थी, वो भेड़िया खराब था, तो उसकी वजह से सारे भेड़िए खराब हो गए, एक ब्लैक शीप। ना अब हम मैं शीप हैं। क्या ये मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ इन कहावतों के, ये सही होंगी मछलियों के लिए और भेड़ियों के लिए, लेकिन इंसान को ये लेजी बना देती है, खासतौर पे मेरे जैसे दिमाग का इंसान हो, वो तो फिर ग्रांटेड ले लेता, हाँ यार मेरा कसूर थोड़ी है, वो तो इन्होंने ऐसा कहा था तो मैंने कर लिया। ये गलत फॉर्मूला है, मछली का फॉर्मूला आई मीन नहीं है सही। ये कहते हैं लोग, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मुझे हजम नहीं होता। आई मीन मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो लेकिन भाई देखिए, ये तो एक हमें जुबान तोड़ना है। होगा ये सारा जो क्लीशे है कि अ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही है नहीं बिल्कुल। कि जी नहीं हाँ, अब जैसे आप ये देखें कि सॉरी पाकिस्तान सॉरी, एक। आप ये मुहावरे हाँ वाली जो सॉरी। मैं बात कह रही हूँ ना, ये तो इसकी जुबानों की खूबसूरती होती है ना। इसमें ये होता है हाँ, कि लेकिन मेरे बुराई हिसाब से फिट नहीं हो रहा, आपके हिसाब से हो रहा है। अब वो सिक्स है नहीं जाहिर वो है, एवरीवन गुरुजी हैव वाली ओन पॉइंट ऑफ व्यू। या वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपके बिल्कुल। उससे इख्तिलाफ है, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर रहा, जैसे सर सैफी ने फरमाया कि अपना अपना वो 6 और 9 वाला चीज आ गई ना यहाँ पे, कि मैं देख रहा हूँ बिल्कुल 6 है, आप देख रहे हैं 9 है, और बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब जैसे ये देखें कि पाकिस्तान की बात, इंडिया जाहिर सी बात है गवर्नमेंट लेवल पे हम भी इंडिया की जगह होते तो पाकिस्तान की बात नहीं मानते, क्योंकि एक जाहिर सी बात है। लेकिन अब अगर एज ए मुस्लिम सऊदीया बात करे इंडिया की गवर्नमेंट से, उसका असर होगा। दूसरे अरब ममालिक बात करें जो कि फर्स्ट वर्ल्ड मुस्लिम है, जैसे हम लोग तो थर्ड वर्ल्ड मुस्लिम है ना, हमारे पास तो मजहब पहले तो हम हिंदू थे, मेरे दादा के दादा ने इस्लाम कबूल किया था, और फिर जब पाकिस्तान बना तो अपनी जान माल इज्जत बचा के, क्योंकि जहाँ मेजोरिटी हिंदू की थी वो मुसलमान पे जुल्म कर रहे थे, जहाँ मेजोरिटी मुसलमान की थी वो हिंदू पे जुल्म कर रहे थे, तो वो एक पॉलिटिकल सिस्टम चल पड़ा था, जिसकी वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सेपरेशन किया। तो कहने का मकसद ये है कि सैफी भाई हैं अभी मेरे ख्याल से, अच्छा चले, तो जी सैफी साहब आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? जी देखिए, मैं ये कह रहा था, सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी।
जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि एवरीवन हैव ओन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो आप कैमरे के सामने आए। ऐसे तो यार मुझे अजीब ही लग रहा है। हाँ, थैंक यू सर। जी सर। चलें, ओके, ऑलराइट, दैट्स नॉट बिग डील फॉर मी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि एवरीवन हैव ओन पॉइंट ऑफ व्यू, और आई थिंक कि मॉरल ऑफ स्टोरी यही है, और और सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही सेम होना चाहिए कि हमें अवेयरनेस फैलानी है, इंसानियत आम करनी है, ह्यूमैनिटी आम करनी है, एंड वी शुड हेल्प दोज पीपल्स, नीडी पीपल्स। तो हम सबका काम एक ही है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यानी वी दोज पीपल्स लव ह्यूमैनिटी, और अवेयरनेस के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये नहीं देखना कि मिसाल क्या है और क्या लहजा है। भाप देखें, भाप समझनी है हमें, हमें लहजे नहीं देखने, हमें अल्फाजों का मतलब समझना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, और Yes, बाकी you're right. जाहिर है सबकी राय अलग होनी चाहिए, और सेम राय होगी भी नहीं कभी। तो सबका मजा भी अलग नहीं पॉइंट ऑफ आएगा। व्यू होता है, एवरीवन हैव ओन टेस्ट। Yeah, if we all are the same, so we don't have any charm to spend the wonderful life. We are different, so that's why we have different. क्या कहते हैं उसको, फिर मैं वही कहूंगी, मिसाल दूंगी तो आप बात एग्री नहीं करेंगे। हमारे डिफरेंट वो हैं, फ्लेवर है ना, माय फ्लेवर एंड योर फ्लेवर, सो वी हैव डिफरेंट फ्लेवर बिकॉज वी हैव द जाहिर है, जिस डिफरेंट। तरह मैंने कहा कि एवरीवन हैव ओन टेस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सर। I'm agree, totally agree. We need to understand to each other. बिल्कुल। यस, एग्रीड एग्रीड 100%। और चलें, सेइंग की बात हो रही है तो एक और सेइंग है, मेरे दोस्त अक्सर कहते थे, सीइंग इज बिलीविंग। अब सीइंग इज बिलीविंग वो भी मेरे जैसे हजम नहीं होती। हालांकि बहुत बड़े बड़े गोरों ने कही है, और पता नहीं किसने कही है, मुझे याद नहीं। तो अब सीइंग इज बिलीविंग कैसे? अब मैं तो, मेरी तो बेस ही ये है कि मैं अनसीन पे बिलीव करता हूँ। अल्लाह ताला को मैंने नहीं देखा, मैं बिलीव करता हूँ। कुरान मेरे सामने नाजिल नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए मेरी जान हाजिर है, क्योंकि मुझे पता है, मेरा यकीन है कि कुरान अल्लाह की किताब। तो कहने का मकसद है, मेरी अभी भी पड़ोस में कोई रह रहा है, मुझे पता है कि वो अभी है वहां पे। तो अनसीन पे बिलीव करते हैं हम सारी जिंदगी, और हमें करना चाहिए। अ, जो कयामत आएगी वो भी हमने नहीं देखी, और मुझे बिलीव है, और हम सबको होना चाहिए। इनफैक्ट कयामत तो ऐसी चीज है, हर मजहब का आदमी उसे मानता है। वो अपने अपने जबान में मानते हैं, लेकिन सबको पता है दुनिया एक दिन नहीं खत्म नहीं, होनी है। असल में अच्छा। आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें। नहीं, मैंने कर लिया, लेकिन मैं सुनना चाह रहा हूँ आप क्या कहते हैं। मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि असल में अनसीन या सीन वाली बात इसमें नहीं है ना। अ, देखें, अब आप अगर आप साइंस पे चले जाएं, तो साइंस को कब पता चला ये कि दुनिया गोल है, और फिर तहकीक हुई कि दुनिया गोल नहीं, बेदवी शक्ल की है, और वो कुरान में काफी अरसे से लिखा हुआ है। कितने कितने साल हो गए कुरान को नाजिल हुए। तो ये अनसीन वाली बात तो इसमें पैदा नहीं होती ना। इससे तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ, इससे तो फिर मुझे डिसएग्री करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो फंटा कम कर रहे हैं, इसमें कोई जाहिर बात है, एवरीवन हैव ओन चॉइस यार। हर कोई अपने लहजे से बात नहीं करेगा, नहीं, और बिल्कुल सही है, जिसको एग्री माजरत करना क्यों। है वो एग्री करेगा, और जिसको मैं तो, मुझे तो अच्छा ही जब लगता है जब, देखिए यही तो खूबसूरती है ना, कि जैसे मैडम ने कहा, आपने कहा, गुरुजी ने कहा कि हम मुख्तलिफ हैं। मैडम ने अभी भी यही कहा कि हमें डिसएग्री करते हुए एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। Exactly. एग्री। बिल्कुल। जी। और मैडम ने भी यही कहा था। और लेकिन अगर एग्री करते हैं तो हम एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली करेंगे ना, वो तो एक इजी चीज है। मजा तो तभी है ना। और हमारा मजहब भी हमें ये सिखाता है कि इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे को कबूल करना है हमने। तो आप डिसएग्री जाहिर है। करें, आपका राइट है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बहुत प्यारी, बल्कि बड़ी गहरी और प्यारी मिसाल दी है आप। बिल्कुल आपने मेरे हिसाब से, बल्कि आपने शायद मेरा माइंड बदला है। आप माजरत क्यों कर रहे हैं? आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बड़ी हिकमत वाले, उससे मुझे सच्चाई नजर आई उसमें, और मैंने उस तरह से सोचा, और मुझे थोड़ा सा चेंज आया मेरे माइंड में। तो आप माजरत नहीं करें, कहा करें, और इसको कंजूसी ना इख्तियार करें, निकालें अपने दिल से जो है दिल में। वेरी नहीं, नाइस, जाहिर है वो एक्सीलेंट वक्त सर, पर एक्सीलेंट। इंसान बात करता रहता है जो जहन में हो। अमेजिंग। और जाहिर है मेरा अमेजिंग। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं था, ये मेरा आई थिंक सेकंड टाइम मैं लाइव आया हूँ टॉर्च प्लेटफॉर्म पर। तो इस जी वजह सर। से भी जरा Okay. खामोशी Mama है, Din आप ने मुझे समझ सकते हैं। बोला, Mama लेकिन Din इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए आई थिंक।
Exactly. Mama Lynn बिल्कुल said, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। advise me to I connect to you and to motivate you to be live and to share your knowledge, to ऑलराइट, दैट्स गुड। share your experience about how you are promoting the peace. And so please tell us about more, because I also have, it is my firstly I am interacting to you, even you also belong my same country, but I don't know much about you. So which tell us your previous activity and what are your plan to promote your देखिए objective to promote प्रीवियस प्रीवियस का तो ये है कि अब ज़ाहिर है कोई नहीं चाहता कि फेम मिले, फेम हो, सोशल वर्कर टैग होना चाहिए इंसान के नाम के आगे। देखिए जो किसी की मदद करता है वो सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है। तो ये बेसिकली शुरू वहाँ से हुआ था कि ज़ाहिर है इंसान के दिल में एक तड़प होती है कि यार वी शुड वर्क फॉर पुअर चिल्ड्रंस, फॉर दोज़ पीपल्स दैट डोंट हैव एनी, यानी उनका कोई सहारा नहीं है, तो उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो वहाँ मैंने एक प्राइमरी स्कूल से शुरू किया था, तो वो ज़ाहिर है उन बच्चों से मोहब्बत थी मुझे। तो मैं वहाँ जाता था, उनके लिए बुक्स वगैरह, बैग्स वगैरह, तो ऐसा कुछ वो सीन था। तो वहाँ से मैंने शुरू किया और फिर ज़ाहिर है दोस्तों का प्यार था, उन्होंने प्रमोट किया मुझे। तो आई वाज़ ऑन दैट स्टेज। और उसके बाद मैंने काफ़ी वक्त ऑनलाइन नहीं था फेसबुक पर, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह था और काफ़ी मसरूफियात थी मेरी। और रिसेंटली अभी मेरी सीएम साहब से मुलाकात थी यहाँ बलूचिस्तान में, जाम कमाल साहब से। तो वो भी आई थॉट कि आपने देखी होगी पोस्ट मेरी। तो ये जाहिर है ये क्या कहते हैं उसे कि यानी एक वक्तन बवक्तन ये बात चलती रहती है, तो इंसान फिर कहाँ से कहाँ पहुंचता है पता नहीं चलता, लेकिन दिल साफ होने चाहिए। और okay, you belong to the Balochistan, नो आई एम नॉट, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ और मैं कराची में रहता हूँ। but you are working in the Balochistan. नो आई एम नॉट वर्किंग ऑन बलोचिस्तान, आई शुड वर्क ऑन ऑल ओवर पाकिस्तान, बट आई एम Okay, ट्राइंग टू वर्क ऑन बलोचिस्तान नाउ। और मैं इस वक्त बलोचिस्तान में इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ मेरी मीटिंग्स थी, कुछ दोस्तों से मुलाकातें थी, और एमपीए साहब था हमारा, उनसे मुलाकात थी, और सीएम साहब से मीटिंग थी मेरी। fine. जी हाँ। So have you visited to the Gawada? जी नहीं, इस वक्त तो मेरा आई थिंक कैमरा फिर इशू कर रहा है। वेट, आई विल बी बैक। वेट अ मोमेंट। जी मैम, आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहेंगे जब तक सर सैफी आते हैं। So I am really appreciate him in this young age he is focused on his work, and he is think about he is doing the volunteer work. So we need to these things, you know. In Pakistan, I observe what actually I'm also interacting with my community people. So they don't understand what is the volunteer work and who is the volunteer. So मैं कहती हूँ, if you don't have to do something, if you are not you have the gap from your study and you are waiting for result or whatever, and you want, so you engage yourself in any volunteer work, so you will be get the you will become the skilled person, and you will be aware about your skills, and you will it's help you if uh, you are doing you are initiate as a volunteer, so you it's help you to find out your skills and your potential, so it's help you to choose the career and your field as well. So we need to create the awareness Yeah, regarding volunteer and yeah, we volunteer. need, and yeah, and yeah, we're really thankful to Mr. Saifi that at such a young age he's doing efforts, and we appreciate you also, Madam Fatma Aziz, that you're doing such great works. Can you explain more that what in detail what are you doing, like especially or particularly Um, actually, regarding agriculture, especially? I also work. You know, I observe. Just you said that in our society, I'm talking about the Pakistan and my area, especially we emotionally we are very we react usually emotionally.
we observe the behavior of our society. We don't have the patience. So because of the corona, I take it as a blessing to interact more the community people. So usually I visit to the grounds where the matches are going on to interact the young people, the players. So talking with them to know how they are thinking, what is going on in their mind, how they are behaving to each other. So we are also so I in my area there are also the Hindu community. I told you, okay, before it I never met any other religions people. So I want to share one thing. So I am interacting with the players when the match is over. So Manika, please come and I want to talk to you. How was your experience? Or like simple asking the question, simple ask. So there was one uh, boy who is belong to the Hindu community. So Manika, please come. So he tell his name. So I because his name I understand कि he is not Muslim and he is Hindu. So मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा encourage किया. So मैंने कहा tell us about what do you want to be, what is your goal, and what is your relation, your friends bullying you. So I no no no. So he share me with his experience. No, we are family. My friend are my family, and he is promoting me. Sometime he is taunting me, but it is a part of life. Or he is very confident. I make his video. So I was really appreciate. So during this, when I'm calling, okay, please come and I want to discuss. So one Muslim boy said, uh, teacher, he is, पता नहीं, should I say, but uh, he is Hindu. मैंने कहा, so what? But he is your friend, so he is now my friend. So I didn't say okay, all the Muslims come to me. I said you all people come to me. I want to discuss. So he feel embarrassed. Okay, sorry, I should don't say. मैंने कहा, yes, we need to be. So there is no need to be. Make the separate group if we are not have the same belief. So I'm working on it. You can say the interfaith. Even what is your belief, it is your personal matter. We don't have any problem. So Alhamdulillah, because I'm the teacher, so people give me the respect and they listen to me. Sometimes they are making create some noise or like this, but they are listening and they are behaving which actually I want to be. So it was wonderful experience to interact the different community people. So I have planned to also visit to the my one social is and my one Bangladeshi friend Rayanul Kabir. I think you also know him, Rayanul Kabir. So he always asking me about "Okay, what do you think about the people of Bangladesh and the people and what you think of falan falan like. So I plan to visit the Bangladeshi community. So little bit I have success. So I tell him that we love you people, whatever we did in past, but we are same and we accept as Pakistani our mistake. And now it is time to be create uh, to forget all the things which is we are not responsible or that action because we are not there. What is happened in 1971, but as present and present generation. What happened in 1971? Because it is recorded, so many people don't know. So, in simple words, how can you define what happened in 1971? Actually, we are we are the same. The Bangladesh is the part of the Pakistan. In 1971, it is separated. So usually people it take it. But according to my knowledge, madam, majority of the Bangladeshis wanted separation.
They I am wanted going to tell you. separation. I am going to tell you. इसका positive way when I am asking about the Rayyanul Kabir. So I see this all uh, event or क्या कहना चाहिए कि it's okay if now it's separate. Still, he is our brothers. It is our soul. I see that now because of this action, one more Islamic country appear on the map of the world. So, so That's what? good. That's nice. Uh, Yeah. if we have the different boundaries, we have the boundaries and we have the different flag and whatever. So, but we are in same. We are our part of the Muslim Ummah. So I saw these all things like this. So we don't have any problems if Nice. we are separated. Yeah. So this are, but we need to be, I believe on that. United. If, huh, if the Mm. Diware burden, you know about the Diware burden? If it can be fell down, the power of the people. So we can all the hurdles which are is between our and the Bangladesh, we can fell down ना, हम उसे गिरा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्टेंस है, we can near as much as possible by connecting people, by creating the positivity and to helping to each other, because we are neighbor country as well. जैसे we also can support India, whatever we are different, before it we are same. So the boundary, this is also the problem of the political people. They are creating. So mujhe it's okay. I love my country. It give me that identity, and we want this, and it is a blessing of Allah. But I accept India as my neighbor country. It is also the very important, and we need to be the very good relation with them. We need to be have to promote to each other. सो दिस इज मैं सारी चीजों को इस तरह से देखती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हम सेम थे भाई, सेम नहीं थे। जैसे आपने कहा वो दे आर डिमांडिंग, सो हमें उनके एस्पेक्ट से सोचना पड़ा। अगर मैं आपको आपके राइट्स नहीं दे रही, आप उसे ऐसे ट्रीट नहीं करते, तो डेफिनेटली व्हाई यू विल बी यू व्हाई यू विल बी कीप विद मी, अगर मैं आपको स्पेस ही नहीं दूंगी तो। सो अगर ऐसा कुछ जो भी था तो इट्स ओके, बट हाँ जिस तरह से हुआ, जिस तरह से वो नहीं होना चाहिए था। आई जैसे मतलब मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करूंगी, उसको नहीं करूंगी। हमें इट्स नीड टू बी, मतलब हमें जैसे कहते हैं ना कि दो भाइयों में भी अगर झगड़ा होता है, अगर वो सेपरेट होता है तो इट्स नेचुरल थिंग्स। इसमें कोई इतना ज्यादा हंगामा शोर करने की जरूरत नहीं होती। एक हद तक ही वी नीड टू बी कन्विंस यू के इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो मैं कहूंगी एज फ्रेंड अब्बास, दिस आई थिंक इट्स नॉट गुड, you avoid this, you try to understand, but this is my limit. I just can to convince if, but you are responsible of your action ना, so but बस मैं आपको कन्विंस कर सकती हूँ, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, मैं पावर के साथ Very आपको true. नहीं देता। Very मेरा true. मेरा मानना ये होता है। तो जब Very बांग्लादेश की true. बात हो रही है, चाहे इंडिया की बात हो रही है, लोग कहते हैं फिर उसमें कायदे आजम का आ जाएगा, उसमें उसका आ जाएगा, ये गलत है वो गलत है। आई सलूट कायदे आजम, आई लाइक हिम, आई लव हिम। जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया। वो हमारे जो सिनेरियो था, हमें उस सिनेरियो को, सब चीजों को समझने की जरूरत है। वी नीड टू बी अंडरस्टैंड, बट अगर बस वट इज द करंट सिचुएशन इज गोइंग ऑन, सो जो मूव ऑन करना चाहिए, हमें पास्ट में जिंदा नहीं रहना चाहिए। Past is past. We should live in the present and we should focus on the future. Yeah. Future will be And better. future will be better. And I agree with you, madam. And I see Bangladesh as a role model, Right. because a little time back, we were above Bangladesh, but in Yeah. front of our eyes now, I personally told my Bangladeshi friend that you are tum do टके के हो. Now that Bangladeshi friend tells me that tum do टके के हो. So can what I mean to say that we should follow Bangladesh and we should follow the model. We should copy them. It is an inspiration for us. The way it has grown successfully in front of our eyes, we are proud to be their neighbor.
India is very different. India has a population of 250 crores maybe, and we have population of uh, Jazz. How are you? I thought I'm talking to Madam Fatima. Hi, Jazz. How are you? So let's welcome Madam Jasmine Shumale, the creator of Waves of Kindness family. So, yes, Jazz, what would you like to say about Torch, and what would you like to talk to Madam Fatima Aziz from Welcome, Pakistan welcome, welcome, doing Jess. great efforts for community? Oh, I think He she is, has a bad connection. So, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हमें बांग्लादेश को फॉलो करना चाहिए किस तरह से वो ऊपर आया है, उसकी नेशन बहुत स्ट्रांग है, वो लकी हैं, सेपरेट हुए तो आगे बढ़े, और पहले वो 2 टके के थे, आज हम 2 टके के हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो और लेट्स वेलकम आवर न्यू गेस्ट, and I cannot see the name, exactly. unfortunately. Just My try to, my name is Ashok Nishal. Yes, sir. Uh, Ma'am, Well, Lion Critic knows me. Mr. Patel wow. knows me. Yes, sir. We are so honored to have you. And please give a little intro for our audience. Please, sir. मैं इंडिया से हूँ जी। अगर आपको इतराज नहीं है उर्दू में बोलूं, पंजाबी, इंग्लिश, किस अरे में बोलूं मैं? सर, आपकी मर्जी है, आप मेहमान हैं, जिस जबान में आप बोलें, हमारे लिए ऑनर ठीक की बात है। प्लीज ठीक है। प्लीज ये जो मैम लाइन चेटिक हैं, इन्होंने ये जी जो टॉर्च शुरू किया है, ये अब जी। टॉर्च नहीं रहा, ये एक सर्च लाइट बन गई है। वाह, ये एक सर्च लाइट है, और जो मैम है वो बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हैं जैसे अल्लाह रब का नूर उनमें आया हुआ है। अल्लाह के, पॉजिटिविटी वो तो हम सब में है, वो तो नहीं, हमारी कुछ रूह 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 उसी से देर तो बनी आर है। देर आर समथिंग स्पेशल। कुछ चीजें इसी स्पेशलाइजेशन के लिए बनी है। आप ठीक है, एवरीबॉडी इज MBBS, बट शी इज MD। शी इज MD। तो यस, कुछ नो गुण डाउट। ऐसे होते हैं राइट, लीडरशिप के, और लोगों को साथ लेके चलना, ये उनके गुण हैं। तो अच्छा, एक जबरदस्त। ऐसा स्टार्ट दिया है उन्होंने और लोगों को इकट्ठा किया है, और खास करके पाकिस्तान में आके मैं भी जाता रहता हूँ पाकिस्तान। तो अभी आपकी डिस्कशन हो रही, मैं सुन रहा था थोड़ी देर से कि बांग्लादेश, और कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान जितनी देर तक अपनी रिलीजियस सर्कल से नहीं निकलेगा, इसका कुछ नहीं बन सकता। रिलीजियस सर्कल से बाहर आना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, रिपब्लिक मीन हर एक को मौका, हर एक को, यहाँ पर रिलीजन नहीं देखा जाता। कोई भी इंसान जो माइनॉरिटी में है वो कभी भी वहां का जो की चेयर है वो नहीं ले सकता। कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इवन के कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी नहीं बन सकता। दिस इज ड्रॉबैक, दिस इज ड्रॉबैक। ब्लास्फेमी लॉ और ऐसे ऐसे जो लॉ है रिलीजन रिलेटेड, उन लोगों को वो ये जो लॉ है इन्होंने बैकवर्ड कर दिया है, एक सेंट्रलाइज कर दिया है कि इकोनॉमी जो है सेंट्रलाइज हो गई है। अब यूरोपीय यूनियन ने भी ऐसा कहा है। देखिए, अगर बाहर से यूरोप से हर कंट्री से पाकिस्तानियों को वापस भेजेंगे तो इनकी इकोनॉमी कहाँ रह जाएगी? पाकिस्तान को कोई माल नहीं खरीदेगा। आप देखो, अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो ये जो रिलीजियस चीजें हैं ये अलग रखनी चाहिए।
आप कौन होते हो किसी को कुछ कहने वाले? अल्लाह क्या इतना कमजोर हो गया है कि कोई बात आपको करेगा और अल्लाह उसे सजा नहीं देगा? आप कौन होते हो? आर यू एजेंट ऑफ अल्लाह? आर यू ट्रेडमार्क? आपने कॉपीराइट किया हुआ है? जिंदगी में याद रखें, आप अगर यूनिवर्सल हो आप, तो ही यहाँ प्रिवेल कर सकते हो। हम हजारों साल पुरानी जो हिस्ट्री है उसे कैच नहीं कर सकते, उसे पकड़ के अपने साथ नहीं रख सकते। उससे कुछ लेसन ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ चलते रहे तो हम तो स्टोन युग में, केव युग में पहुंच जाएंगे। हम आज की फैसिलिटी को लेना भी चाहते हैं, पुराने से जुड़े भी रहना चाहते हैं। यही एक्सीडेंट का कारण है, यही एक्सीडेंट का। आपका ध्यान पीछे है और गाड़ी आगे चला रहे हो तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? अवेयरनेस लाओ, यूनिवर्सल बनो, एक दूसरे से प्रेम, प्यार, इज्जत, एक दूसरे का एहतराम करो तो आगे बढ़ने का मौका मिले। हर कंट्री जो है ये प्रेम चाहता है, अमन चाहता है। तो बांग्लादेश ने इसलिए अपनी तरक्की की, उनकी आपको जो है फाइनेंशियल पोजीशन देखो, दैट इज मोर देन इंडियन। उनका डॉलर जो है इंडियन रूपी से भी ज्यादा है, उनका जो टका है। तो कंपेयर करने से पहले सबसे पहले इंसान को आप सोचना चाहिए, मुझे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सर कंपैरिजन तो है ही नहीं ना इंसानियत में। हाँ, कोई है ही नहीं। देखिए, जाहिर है अगर हम तो जुड़े हुए हैं, बस एक चीज से जुड़े हैं कि बस ये सर जो वी रिलीजन, रिस्पेक्ट मजहब है, यही हमारे लिए सब कुछ है। ये गलत है। सर वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एवरी पीपल। नहीं नहीं, देखिए ना, आप मैं किसी रिलीजन को बिलोंग ही नहीं करता, और मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता अपनी लाइफ में रिलीजन। ये है ही कुछ नहीं, है ही कुछ चले नहीं। एवरीवन रिलीजन हैव का ओन मतलब ही पॉइंट ऑफ कुछ नहीं व्यू है। ओन टेस्ट ऑफ मत टंग। रिलीजन का मतलब ही कुछ नहीं है। क्या मतलब है? अगर मैं मुस्लिम हो जाऊं तो मेरे सिर पे बाल जो कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? अगर मैं नहीं हिंदू सर हो ऐसा जाता हूं नहीं तो है। मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये जो है ना, अपना इंसान वे ऑफ अपने पे पाबंदियां लगा लेता है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? नहीं सर जिस फिलॉसफी चेक्स में में इंसानियत है। फिलॉसफी में आप कहा मेरी बात गया सुने। है। जी जी, आप करिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस चेक्स में इंसानियत है जो ह्यूमनिटी से बिलोंग करता है उसके लिए तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि एवरीवन हैव ओन टेस्ट ऑफ टंग। जाहिर है हर कोई अपने मौजू के मुताबिक बात करेगा। लेकिन यह है कि टॉर्च इसीलिए ही बनाया गया है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रियलाइजिंग चेंज इन ह्यूमनिटी। हाँ जी। समझ रहे हैं आप। ये तो इसमें तो ये हम ये रिलीजियस से देखिए, तो हम ये ये तो हम देखिए। अभी हमसे प्रवीण पटेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो वो इंडियन जी, हैं कनाडा में रहते हैं और वो मुस्लिम नहीं है। तो इसमें सवाल ये ये है है कि आपने कि आपको आप टैग लगा लें, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं, और आफ्टर ऑल यू आर ए ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले तो ये बात है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सर एक दैट्स व्हाट आई एम बच्चा टॉकिंग अबाउट। एक बच्चा है, उसको आप अगर, वो पुराना मुझे इंडियन एक सॉन्ग याद आता है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की इंसान बनेगा औलाद बिल्कुल। है, इंसान सर बनेगा। आई अंडरस्टैंड आई नो अबाउट हाँ, दैट। जब जब हम इंसान ही बन गए तो हमें सर वी कोई आर चीज बनने इंडिपेंडेंट। की। मैं अल्लामा इकबाल की पोएट्री है मैं बताता हूँ कि नहीं हाँ जी। तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वी आर इंडिपेंडेंट सर। वो फिर हर किसी का अपना मर्जी है ना। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते ना इस मामले में। ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ या हमारे साथ भाई मौजूद है वो कह सकते हैं। तो इसमें तो हम किसी के ऊपर ब्लेम तो कर ही नहीं सकते कि वाई यू आर देखिए, हिंदू वाई यू आर मुस्लिम वाई यू आर क्रिश्चियन वो यूं ही टैग जैन और लगाए हुए एवरीथिंग हैं, एल्स। यूं ही टैग लगाए हुए हैं, पाबंदियां बढ़ाई हुई हैं। और ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, अच्छा आप क्या कहना ऑल चाहते हैं आप खुल ऑल के बताएं ना। ऑल रिलीजियस प्लेसेस हैं, इन्होंने खाने पीने का धंधा बनाया हुआ है, लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और क्या है? इंडिपेंडेंट सोचने दे उनको, आजादी से सोचने दे, अच्छी बात सोचने दे। आप नफरत सर लाते हो एक तमाम दूसरे शख्स के खिलाफ। जितने भी धरती पर लोग मौजूद हैं इवन के चाहे वो ह्यूमन बींग से हैं या फिर वो इंसान नहीं हैवान है हर किसी के पास अपने राइट्स हैं। हुकूक है हर किसी के अपने।
नहीं, राइट करप्ट किए जाते हैं ना, इन रिलीजियस वालों ने राइट करप्ट किए होते हैं, इसीलिए। तो चलो इस बहस को तो ये नहीं, बहुत हम लंबी तो है, रिलीजियस इसको वालों तो की तरफ तो छोड़ना हम जाते चाहिए। ही नहीं है ना। हम हमारा हमें जो हम हमारा जो मालिक हमारा है, मौला है, रब है, हम उस पर चलेंगे। हम रिलीजियस वालों को तो हम छोड़ देना, अब चाहे वो कोई भी, वो फिर पंडित है, वो फिर यानी कोई मौलवी है, जो भी है। हमें ये देखना है कि हमें किस पर चलना है, इंसानियत की राह पर चलना है हमें। हमने तो देखिए, पॉइंट ऑफ देखिए व्यू तो ये तमाम जो लोगों का अलग है। जी जब ये फरमाए, आप क्या बोल टॉर्च रहे हैं? जब ये टॉर्च एस्टेब्लिश हुआ, मैं तब से जी हाँ। इसके कनेक्शन में हूँ। जी। फॉर लास्ट 4 और 5 years जो मैं ओके, मेरे मेरा भी कांटेक्ट में तीन है, साल का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट। मेरा मेरा उनसे लाइव होता रहता है, तो जी। मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, ठीक है। तो तो फिर आपको अच्छा मुझसे बेहतर काम पता है, होगा। अच्छा काम कर रहे हैं मैम, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जी। तो उनसे ब्राउन राइस बनाना भी सीखता हूँ। नहीं, बड़ा उनका मेरा और अच्छा प्यार का रिलेशन है। तो अच्छा जी। काम जो है वो अच्छा ही होता है, कोई भी तो सर, अच्छा फिर काम। तो आप बेहतर जानते होंगे ना कि रिलीजियस तो इसमें हम कोई भी एक्टिविटी नहीं लाते। हम क्या, इवन के एनी पार्ट ऑफ टॉर्च, कोई एक अकेला शख्स टॉर्च का, वो तो रिलीजियस एक्टिविटीज तो लाता ही नहीं है ना बीच में। मैं क्योंकि द मैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर रियलाइजिंग चेंज इन ह्यूमैनिटी, मैं जो जो इंसानियत के आपसे लिए सर रिक्वेस्ट बनाई गई है ना। मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, जी। ये इंसानियत के रास्ते में ये जो रिलीजन ने रोड़े अटकाए हुए हैं ना, मैं उनको दूर करना चाहता हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ। कर तो नहीं सकता, जो कर मर्जी करे, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है, लेकिन ये जाहिर एक है। बिगेस्ट काज है हिंड्रेंसेस का, ऑब्स्टेकल्स का, रिलीजन। इंसानियत नहीं की सर, राह में देखिए ये ऐसा है ना। रुकावट है। चलिए सर, ये तो फिर हम दोनों दोस्त भी हो गए लेकिन थोड़ी सी दुश्मन भी हो गए। आप, मेरा मकसद बिल्कुल आपके उलट है। मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को उसके उनके मज़ाहिब से जोड़ दूं। तो चलें, अच्छी रहेगी, दोनों की जमेगी। हम दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मजा आएगा सर। हाँ, कोई बिल्कुल नहीं सीखेंगे भी बिल्कुल, ऐसा मुखालिफ। आपसे होता नहीं, कोई और बात नहीं, आपकी ऐसा नहीं। शागिर्दी भी। मैं मुखालिफ नहीं कभी होना चाहता। आई वांट टू बी बिल्कुल। यू। मैं आप ही बनना चाहता हूँ, मुखालिफ नहीं होना चाहता, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि वासुदेव कुटुंबकम, कि ये जो सारी दुनिया है ये हमारा परिवार है, फैमिली है। और दैट्स द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मैं आई डोंट वांट टू बी योर एनिमी। I want to be you. I want to be in ya, ma'am. Have a यस। nice या day. एक्चुअली दैट्स द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग Okay, अबाउट। let's welcome Madam Lynn Chitek, and we have हेलो मामा, हाउ आर यू? our This is Hi, Ashok Nistal, ma'am. how are you, everyone? वी Very आर गुड fine, मामा, हाउ very आर यू? fine. we are fine, ma'am, and you have your old members as well from India and Pakistan, and Asha, very lovely people they both are. Ashak is here. Fantastic. Welcome, welcome. Welcome, 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 ma'am. So nice to see you, Ashak. I have already described. This is not a torch, but a lighthouse. Ma'am, Chitek is a lighthouse. Thank you. A power, Mhm. atomic power of positive energy. Thank you. And ditto. So thank you for keeping the fort, Abbas. Very nice. Thank you, thank you, thank you, thank you, Thank you for thank you, holding. Ma'am, everyone. Thank you, I Mama want Lynn to Chitek. say you something. I want Yes, to sir. say you something. वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। दैट्स गुड, दैट्स मैम, गुड। you are so Beautiful, far, beautiful. you are very near, but you are in my heart, always, always. Not me in thousands and thousands of people. Thank you. Thank you. Thousands. Thank you. Welcome everyone to Torch Environment. Saifji, Abbas, Ashak has been with me since the beginning of Torch. We are so grateful to have him. He's a light spirit of deep, deep compassion. And he has been a really good friend.
And so, Ashok, we love your singing. We love your beauty. Thank you so much. So, what have you been discussing? I need to catch up. Actually, Mr. Ashok just came now, ma'am, and he's such a lovely person. Although I disagree with him, but it's a platform of agree to disagree, and we have to All accept right. each other with our differences. So he's against something, and I'm in favor of something, but Oh, still, no, he's a very not allowed. You can't do it here. yeah, So, what we yeah. need in life He's towards nature. he's So, yeah, very nice, very nice. And yes, he's forcing me healthy. to be like an extremist. He's forcing me to get out of my this religion thing, but Religion. we were not talking about religion, although he started the topic. But he's a lovely person, and we love him, and it's good that we have different opinions. At the same time, we love each other. Ashok Bhai, Saif Bhai, Mama You Lynn, miss. and me. Thank you so much. Thank you so much. I am never against you. I am with you. I am you. I am you. All right, sir. We I'm also love you. Ashok, you know, you and I go a long way. And Ashok has strong opinions from his spiritual strength. So don't see him against your spiritual strength, which is your strong faith. See him for spiritual strength. I think we look at each other from the eyes of where we live or our religion or whatever, but Abbas has also very strong opinions. So both has very strong spirit. The spirit in them is very, very strong. Spiritually, to really align with each other because your heart beats the same. Both your I hearts. have two lines for you, ma'am. Yes. Kothete amayawe, kothete amayawe, ਚੰਨ ਭਾਵੇਂ ਚੜੇ ਨਾ ਚੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋ ਮਾਇਆ. You are the moon. We don't bother that moon's flashes in sky. You are moon for us, your sun for us, ma'am. You're everything for us. Please remember that our hearts, you know, the wind is blowing. Is the wind blowing in India or Pakistan? There's 3 countries here. We're from very far away, but is the wind blowing? Look outside and see. The sun is shining. Is the wind blowing? Now feel the air. Yeah. Feel the air on your skin. Feel the air touch your skin. Yeah. Felt. The air touches my skin and your skin, and we're one. Yes? Yeah. Very true. Agreed. Beautiful. It's beautiful. Yeah. So It's beautiful. remember that our skin color, all of the things that people are to another realm, it's just from separation of this one beautiful world. Yeah. Yes. So if we come back to this one beautiful place of simplicity, right? Torch is about simple actions for global change. That's all we're here for. Simple action for global change. So let's think about the environment today and the 3 environments. And let's think about this celebration that we're doing for Torch, the Torch environment. So have you thought about the 3? Let me see where the 3 is. Mark Lund came together. You are both young men that have a lot of wisdom. So let's see if we can get some of this going and a good discussion. Okay, so hang on. So the celebration is in 3 environments, right? 3 environments. These 3 environments that we're going to talk about this weekend
is, what is your nature that is connected in the environment? You know, what nature do you connect with? What is your mental relationship to nature and environment? And what is the mental relationship to this great world, the ethereal world? Maybe what you would call Allah, I would call God. Somebody else might call Great Spirit, right? Many people see this unseen world and they give thanks. I give thanks to God every day. And so for me, this relationship in these three worlds all come together through our sound of voice. Our voice, Muhammad, peace be upon him, had a voice. And many people loved his voice. Jesus had a voice. Many people in Hindu tradition had a voice that people loved and followed. Gandhi, Martin Luther King, all of the great voices. If you can remember the three in nature, they didn't do too much against. They went for nature. They went for good mental health to bring next generations for peace. And they went close and walked alone most of the time with God. Yeah, in their listening, in their thinking, in their seeing. But the empathy and the compassion, they had to come to their deeper truth. And the deeper truth for me in the environment realm, which Mark Lund brought forward, and I was already thinking about this. I was so excited about this that he put this together because we only look at environment as climate change. We don't look at the environment within our inner soul. We don't look at our inner environment of our mental health. We don't look at the inner environment of nature and our inner relationship, you know, and how you influence me and how I influence you. Ashok's music influenced me for years because he sings beautiful songs. I don't know anything more than that, but he sings beautiful songs. He has a beautiful family. What I know about you, Abbas, you have a beautiful family and you have beautiful boys. And I haven't met your wife, but I send her my love. And what Saifji did was he came forward and he gave me the idea of Adrak, what Adrak meant when I got back from Pakistan. And the Adrak from Sindh, today I put it on my TV. Hang on. Here's the beautiful Adrak. That's good. It is amazing. It is amazing. So the That's Adrak is 7,000 years old. And this is Saifji that gave me this information. They put so many of these around me. But Saifji was the one to show up. And he also made that simple action. And when Haji Khan Farokh rode his bike across Pakistan for peace, he was the only one out of so many thousands of people. He came with big posters. Thank you, Haji Khan. He came with big gifts. The torch, we love you. He came with big gifts of saying thank you. This is Saifji for me. Saifji brings this beautiful love. Yeah, simple action he took. And so these are what we want to focus on with the torch. And if we can really focus on that, you know, it's great to be kind to each other, but there's also places of discord. And very long ago, I was taught about sound was the biggest healer between human beings. Sound and what comes here out of our voice. And it's one of the things that I've learned over the years of trying to listen. I'm not very good at it, but I do my best. None of us have perfection, but we are progressing towards a positive world for the next generations. I want your children to know that
it's safe between India and Pakistan and Bangladesh and Pakistan and China and Pakistan and USA and Pakistan. And, you know, these are the gifts that we need as human beings for the next generation. If we keep finding discord with each other, the children will only hear the discord. They won't hear the beautiful voices. You're So, right. yeah. So if we can see the voice of the children listening, if we can speak with the watching the children listening, it's probably our greatest gift that we could ever do. If we could really see the children listening. It's one of my greatest pains. If I would have known it earlier, that my children were my teachers, to teach about my voice. Yeah. For the teachers to teach me. That's probably enough about environment, but what do you think about these three natures, these three environments? It's amazing what you just said. And yeah, I also want my children to not have hatred for any country, or they don't get offended when any country's name comes, as you said, that they should understand that we all are friends. India, Pakistan, USA, Bangladesh, and Nigeria, and whatnot. Yeah, this is my dream as well. And these three are environment, like nature, mental, and all of these. As my screen is really small right now, like we have the pillars: peace, um, environment, and health, and technology. So I go with peace, because peace, if we have peace between each other, like USA, Pakistan, India, Bangladesh, Saudi, Iran, whatever, whichever country, if we have peace between us, all other things will come automatically, will follow automatically. If we have peace between us, we can exchange our technologies, we can exchange our even health facilities, like so many places, like here in Pakistan, you are facilitating, you are, since long time, you are giving charities to different parts of the world, and you are helping Pakistan as well, especially. So we are really honored and privileged to have a wonderful person like you, who cares about Pakistan as well. So yeah, I go with peace. Peace brings everything. Because of peace, everything falls into place. So that is my take. I go with peace out of these four pillars of torch: peace, health, technology, and environment. Beautiful, Thank you, ma'am. beautiful. You know, there are moments between all of us that there are so many gifts. Ali Raza is in the stage, so I really hope he comes. I had to stop Waves of Kindness until we figure out how we're going to add it, because it made a mistake. She made a mistake on the back end. So I asked her to wait, so now we have to wait. So hopefully we can create this with her once she comes on. But I think for me, the gift of, you know, how we open to the four pillars, when I think of how Torch looked at healthcare when we first started, health was much more great. You know, it was much greater than just what medical doctors think. And so then I started pondering it, and I started seeing all the different areas of our lives, how much we stand in witness, right? And after going to Pakistan, Fatima took on Torch Environment, and Fatima has been doing so much for Pakistan. So today was a great win, because Senator Atiq, Mian Atiq, he was told about the gifts of people doing that simple action for global change. It's great to talk about life, but if we don't take physical action, simple action,
like planting the gardens, like helping the children talk to another child from Bangladesh or from India or from, the peace work in the Torch is really about supporting talks between children growing seeds. And how does it make a difference when we don't eat well? How does it affect me? How does it affect my anger? How does it affect my emotion when I don't eat well? And so if the kids can learn really powerful gifts of inner peace, the meditation, the prayers, the movements, we as adults can help them and witness the children that are interested in bringing social change. Because I think the peacemakers bring a social change in a new way, right? So with Torch Peace and environment, you're looking at your own inner environment to bring around that peace, to create that system change as a shared leader on the Torch platform. So your Torch relationship is about your leadership around peace and environment this weekend. And how can you think about it in these three worlds that Mark brought forth from Brazil? Mark is from Brazil. I don't know if you've heard him speak, but he's a tremendous scholar. He's been with us on Torch for 4 times. And he brings this old Mayan understanding of nature. And, if we just talk about climate change, it's going to keep being a war. If we act towards climate change, we can bring positive change for our children, right? Positive change. So this is what we're working on. I think it's so important for all of us to have this beautiful thought around nature, and around our mental relationship to nature and our relationship to God and nature. Because environment for me is so great. There's so many layers. If you look at one leaf, that leaf has how many layers to it? And how much will you see in one leaf? So when the wind is blowing, that one leaf is making a difference on how it touches your face. Yep. Yes, yes, agreed 100%. And it's a good metaphor, an excellent metaphor, that how that leaf touches us or air touches us, and that's how we can feel these blessings of nature, no doubt. And I totally agree that how if our children will eat a healthy food and a healthy diet, then they can act and react positively, because it all depends on in yeah we have to go down to the basics, and we have to take care. And yeah, I met Madam Fatima Aziz for the first time on Torch on Earth Day, when I met you for the first time, and it was amazing that you introduced us to Madam Fatima Aziz and other people as well. Uh, and she's doing amazing job for the community, for the city, for the country, and regarding agriculture, plantation, and she's also doing other stuff under Torch platform. So it's Tell, really an honor. tell me what I know you're doing a lot with Wave of Kindness, another organization of Jasmine. And what else are you up to? Actually, right now I'm into some issues physically. That's why I'm not able to be very much active. But I have plans, and I would like to help Mr. Imran Abu Aryan and Mr. Shahrukh Ali from Institute of Peace and Rehan Foundation, and Madam Fatima Aziz, people like them, because I feel that they are my heroes, and they want to do something for the community, and they are already doing it. I want to sort of be a part of their team in the future, and let's see what I can do, because the thing is, there are so many things, but right now I'm caught up into so many things. But I have plans to team up with them and assist them. And I've been to meet Mr. Imran Abu Aryan for the cleanup drive
in Karachi, and I've been to meet Mr. Shahrukh Karobalwala for the same purpose. And I was so much impressed that what they did, and it created an impact. And the area was clean. The administrators came. People from the area management came as well. So it was amazing. So yeah, I have plans, but right now I'm caught up into some things. That's why I cannot uh, assure anything right now on the spot. Are you there? Am I frozen? Oh, We're having technical difficulties. We're having some switching around in the back office, so I'm just trying to figure out what's going on. We lost our good friend Abbas. He held the relationship to Torch environment. So as you gain the witness to Torch and gain the witness to what we've been up to, we've been on for 8 hours today. There's a wonderful musician, Estelle, that wants to come on and sing. So that's very exciting, but I think she's going to come on tomorrow for us. I want to wish you all just the most beautiful evening. The light is really going to keep going for the weekend. The candle is lit. The flowers are here. The gift of spirit of everyone that joined us today is here. So we're going to shut down our live broadcast and we'll go towards the next event. We've got wonderful speakers all day tomorrow, and I think you're going to enjoy. And this is very exciting. Estelle just came out with her first, her verse video recording of her music, but it's phenomenal. So I hope we'll get other musicians and artists to come. And Priscilla, we love you. I hope you come. And we just want to thank you all for loving and creating something precious. So be gentle this evening. And remember your brother and sister in all the words of how we speak and how we connect with nature, how we connect with our relationship with mental and ethereal. And when we hurt one another, we hurt everyone. So that's how we have to change. It's really time to change. And sound and healing and all that there is a very powerful gift of understanding the three environments in your life. So Torch Environment will be running tonight, today, tomorrow. Saturday will be the Celebrity Gurus channel, and then we will have Torch on the other end. So it's good to just be clear and hope that we can have an amazing event, an amazing gift. And God bless you. Have a beautiful day, and stay tuned. You're going to love it. It's quite a gift. Peace and best.